Caro CP Study Circle on today's webinar on New Caro 2020 and Revised Rule 3rd. And on this subject, our very honorable Central Council member CA Sanjeev Singhal ji with us. I welcome you, sir, as a first speaker on New Caro 2020. I also welcome Amit Jain ji from EY as a second speaker on Revised Rule 3rd. I also welcome you, sir. I also welcome our Honorable Northern India Regional Council member Jagdish Singh ji. Welcome, sir. And Rajiv Poliji, sir, from our study circle, and all the attendee on behalf of Pusa Road CP Study Circle. As you know, today we have our Honorable Central Council member Sanjeev Singhal ji. As there is no need to introduce him, but it is my duty to introduce him very briefly for the sake of new member who joined us. Sanjeev Singhal ji is a FCA with 23 years of experience. He is BCom honors from SRCC, Delhi University topper, articleship from AF Ferguson, Delhi, MCom Department of Commerce, Delhi School of Economics, PhD in International Finance from Faculty of Management Studies, Delhi, certificate course on IFRS from ICI. He received more than 100 merit certificates for academics, but more than this, he did a wonderful job at the time of Corona. Some of things I would like to share with you. As a CA Parvar led the COVID-19 relief measure from the front during first and second wave of COVID-19 in the form of free food packets, sanitizer, masks and PP kits, meals and dry rations, arranging critical medicines, free Sanjeevani 2 ambulance, only for the dedicated to chartered accountant and their family. 5. देखो सर ने इशारा किया 5, तो 5 हो गई थी. And he donated oxygen plant at मुनि माया राम जैन हॉस्पिटल, जबकि ऑक्सीजन की कितनी क्यूरियोसिटी थी. Arranging hospital beds, yoga, medicine, counseling helpline, financial matter helpline, scholarship scheme for CA student. These are the other than his academician. Volunteer at Can Support working for cancer affected people. ये मेरे को इसलिए मालूम है क्योंकि मैं भी सीए परिवार का एक छोटा सा हिस्सा हूँ. सर ने मेरे को ये ब्लेसिंग दी कि मैं भी उसका हिस्सा बनूं. और इसके अलावा मैंने एक चीज बड़ी नोट की है, वो मैं शेयर करना चाहता हूँ. इनको फर्स्ट आने की पता नहीं क्या होड़ है, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो सीए का इलेक्शन हो. आप देखिए 2018 में पहले इलेक्शन हुआ तो इंस्टीट्यूट ने भी भगवान की ब्लेसिंग से इनको बैलेट नंबर 18 ही दिया, और रिजल्ट सबसे ज्यादा हाईएस्ट वोट जिसमें 2 सीट निकल जाए. फिर आया इलेक्शन 21 का, 2021 का, फिर आपको बैलेट नंबर 21 मिला. कोई याद करने की जरूरत नहीं, बैलेट नंबर ईयर वाइज, और फिर भी हाईएस्ट वोट, इतने वोट की 2 सीटें निकल जाए. और कहीं से भी ये, वैसे तो ईवाई को प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन कहीं से भी ऐसा ये महसूस नहीं होता हमें इनके साथ रहने में कि ये ईवाई से है. ऑलवेज फ्रेंडली मैसेज, हमेशा हमें सबके लिए काम करने के लिए तैयार, और मैं तो उसके लिए गवाह हूँ. और सर के लिए इससे ज्यादा क्या कहूँ सर. विद दिस आई वेलकम यू सर एंड ओवर टू यू. अमित जी, आपको हम थोड़ा सा वेट ही कराएंगे, सेकंड स्पीकर रखेंगे आपको. श्योर ओवर टू संजीव जी सर. थैंक यू वेरी मच राजेश भाई, थैंक यू सो मच आपके आपके साथ के लिए, और आपने जो इतने काइंड वर्ड्स कहे. मुझे नहीं लगता कि ये मैंने अकेले कोविड में काम किया या अकेले इलेक्शन जीता. ये आप सब लोग थे. सीए परिवार में आज 340 मेंबर हैं, तो ये सबका एक इकट्ठा वो प्रयास था. सीए परिवार ने कोविड में जो भी कुछ किया, और इस तरह से इलेक्शन एक उसका एक नेचुरल आउटकम था. तो हमने कोशिश की है अपने मेंबर्स को सर्व करने की, और डिफिकल्ट टाइम के बावजूद मेंबर्स ने साथ दिया. एंटी इनकम्बेंसी भी रहती है, तो सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आज प्रोफेशन एक बहुत डिफिकल्ट दौर से गुजर भी रहा है. पहले मैं 1 मिनट एक सोशल इनिशिएटिव की बात कर लूँ, फिर मैं प्रोफेशन और टॉपिक पर आता हूँ. तो ये जो आपने स्कॉलरशिप का मेंशन किया, सो वी हैव स्पॉन्सर्ड 102 स्टूडेंट्स फॉर डूइंग देयर सीए, एंड द स्कॉलरशिप इन्वॉल्व्स full fee payment to ICI, which is around 75,000 rupees for the entire course.
including GMCS, ITT orientation course. Plus, we are also paying examination fee up to 2 attempts. Plus, books from Bharatla House, direct text coaching from Vinod Gupta ji, communication skills classes from Concentrics, and a higher stipend of 10,000 per month if they are doing articleship with any of the CA Parivar firm. If any student secures a rank in foundation, inter or final, we also give a laptop or iPad of up to 40,000 rupees. And if they do not get a job after doing CA Parivar will also give them an assured job for 1 year. The criteria for this is that the income of the family should be less than 5 lakh rupees per annum, and recommendation by any chartered accountant in India can be given. Selection is done by a panel having 2 of our eminent past presidents, Jain ji and Nihar Jabdu ji, and from time to time we keep inviting some other interviewers and other people to go through those forms. In fact, anyone is welcome to go through those forms and scrutinize. Our only thing is that the person should be genuine. That is why we ask for a CA recommendation letter, because I believe if my CA is certifying, then that student will be genuine. I'm not asking for any urine in that. Just that if any chartered accountant in India says that I know this student and he's a deserving student, will certainly shortlist the student. Now we are extending the scope of this scholarship from 102 to 120. So now we are giving 18 more scholarship. God has been kind. We have been able to arrange more funds. And besides this, now we are starting a Super 30 hostel for CA students on the line of IIT by Anand, जिसका मूवी भी हमने देखा था. तो ये हॉस्टल जो है दिल्ली में है, दिल्ली में होगा. इसमें ये जितनी मैंने स्कॉलरशिप अमाउंट बताई, ये सब तो हम देंगे ही देंगे. इसके अलावा उसका हॉस्टल का 75% एक्सपेंडिचर भी देंगे, रहने का, खाने का, बिजली का. और ये 75% हमने इसलिए रखा है ताकि स्टूडेंट भी खुद कुछ कंट्रीब्यूट करे, उसको उसकी वैल्यू रहेगी. तो 1,750 रुपया स्टूडेंट को देना है और बाकी हम देंगे. ग्रीन पार्क मेट्रो स्टेशन के पास हमारा हॉस्टल है, जो कि बहुत ही एक प्रीमियम जगह है, और ये हमने मारवाड़ी युवा मंच के साथ किया है. और इसमें क्राइटेरिया हमने थोड़ा सा हायर रखा है कि एक तो हॉस्टल इसमें मैंडेटरी होगा और 80% मार्क्स बच्चे के 10th और 12th में होने चाहिए. ये हम इंटर और फाइनल के लिए देंगे और एक ही अटेम्प्ट हम अलाउ करेंगे, क्योंकि नेचुरली हम अपनी तरफ से मेरिटोरियस बच्चे ले रहे हैं. तो कई लोगों ने पूछा कि एक अटेम्प्ट ये, लेकिन आप अगर सुपर 30 टाइप हॉस्टल बनाते हैं तो उसमें आपको ये भी कंसिडरेशन करना पड़ेगा. और अब तक 2,53,000 लोग इस पोस्ट को देख चुके हैं लिंक्डइन पे. बहुत ही ओवरवेलमिंग रिस्पांस आया है, एंड वी आर इन द प्रोसेस ऑफ इंटरव्यूइंग दीज कैंडिडेट्स. आप में से कोई भी, एक खासियत इसकी और रहेगी इस प्रोग्राम की, that every student will get one mentor, one chartered accountant mentor, 1:1 रेशियो रखेंगे. आप में से कोई भी अगर उस स्टूडेंट को मेंटर करना चाहता है, लेकिन उसके लिए टाइम निकाले, मतलब ये मैं जरूर कहूँगा कि हफ्ते में एक सेशन उसके साथ जरूर आप रखें और उसको अच्छी एडवाइस दें. वो कहीं अगर प्रॉब्लम में है, कहीं गाइडेंस चाहिए, तो उसको वो गाइडेंस दें. तो ये एनरोलमेंट हमने अभी शुरू किया है. आप भी किसी ऐसे डिजर्विंग स्टूडेंट को रेफर करना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा हॉस्टल कंपलसरी है इसमें, तो वो एक ध्यान रखिएगा. तो ऐसे 30 सीट्स हमारे पास हैं, और नेचुरली भगवान ने चाहा तो आगे ये भी इंक्रीज करेंगे, लेकिन अभी ये 120 + 30 150 हमने ये अभी किया है. एंड आगे भी इट विल बी आवर एंडेवर टू सर्व दिस सोसाइटी टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटीज. Friends, let me now come to the topic for the day. It is Caro. And as I said, the times are difficult for the profession. And I have no hesitancy in accepting that the environment for chartered accountants, is changing. It's changing very fast. As our Honorable President has said, that audit is a serious business. So we must understand that if you are doing any audit, if you are doing any certification, our responsibility threshold is very, very high. The expectation of the government and expectation of the society is very high from the auditors.
We are known as auditors, although we give advice also. There is no absolutely, and a majority of our revenue maybe come from advisory services for many of you. However, audit is our bread and butter. We are known for audit. If we give good audit quality, we'll be known for that. If we deliver bad audit quality, we'll be known for that. So it is very important that we do our work diligently, very diligently, and leave no stone unturned while discharging our duties and responsibilities as a chartered accountant. Friends, today I'll be talking about Caro. Caro 2020, ये 2020 का मैच नहीं है, इसको टेस्ट मैच की तरह खेलें, क्योंकि इसमें काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। 2020 में आया था इसलिए नाम 2020 है, फिर एक साल डेफर हुआ, ये फिर डेफर हुआ, और अब जो है जो 21 के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है 21-22 के, उनके लिए ये कारो 2020 एप्लीकेबल है। 50 क्लॉजेज हैं सर इसमें, और जब हम डिस्कस करेंगे तो आप देखेंगे कि ये ऐसी क्लॉजेज हैं, अगर आप इन्हें ढंग से करेंगे ना तो टाइम भी लगेगा और उसके लिए अपनी फीस भी मांगेंगे। कई बार हम कहते हैं कि क्लाइंट फीस नहीं देता, कोई भी क्लाइंट फीस नहीं देना चाहता। आपको अपना काम भी दिखाना है और फीस डिमांड भी करनी है। कई बार हम लोग ये कहते हैं कि इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर्स नहीं है, और इंडिपेंडेंस जो है वो अपॉइंटमेंट जब गवर्नमेंट करे तो उससे आती है। मेरा उसमें कोई, मैं नहीं मानता हूँ। बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ अपॉइंटमेंट C&AG से होती है। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स वहाँ नहीं है। आई थिंक हमें अपने अंदर देखना है। इंडिपेंडेंस इज अ स्टेट ऑफ माइंड, एंड वी मस्ट, एज आई सेड, अटेस्ट फंक्शन को बहुत ही सीरियसली हम ले। तो विद दिस बैकग्राउंड आई विल शेयर माय स्क्रीन, एंड राजेश भाई जब ये स्क्रीन विजिबल हो जाए तो आप मुझे बताइएगा। जी सर, जी सर, आ गई जी सर। चलिए सर, कारो 2020 की सर हम बात करेंगे, और जो है इसमें देखते हैं कि सर क्या क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई हैं। देखिए क्यों आया ये कारो 2020, क्योंकि फ्रॉड्स जब इंक्रीज हुए तो नेचुरली गवर्नमेंट को लगा कि ऑडिटर ही उसकी आईज एंड ईयर हैं। एंड ये जब MCA ने ये कमेटी बनाई थी अमरजीत चोपड़ा जी की चेयरमैनशिप में, मैं भी इसका मेंबर था। सो हर पॉइंट पे MCA का यही मानना था कि हम सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना चाहते हैं। हमें लगता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जो हैं वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभा पाएंगे। नेचुरली काफ़ी बर्डनसम भी है, क्योंकि काफ़ी क्लॉज ऐसे हैं जिसमें काफ़ी डिटेल्ड वर्किंग चाहिए। और आप देखेंगे ये पहली बार ऐसा हुआ है हिस्ट्री में, कारो की हिस्ट्री में, कि हमने ये कहा कि पहले मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लगाइए इन सब आइटम्स पे रिपोर्ट करने के लिए। इसीलिए शेड्यूल 3 बदला गया, और शेड्यूल 3 में वो सारे चेंजेस आए जो कारो में चेंजेस हैं। तो आज जो है अगर हम ये देखें कि अगर ऑडिटर को कुछ रिपोर्ट करना है तो उससे पहले सिर्फ एक रेजिग्नेशन वाला आइटम ऐसा है जिसमें शेड्यूल 3 में डिस्क्लोजर नहीं है, क्योंकि नेचुरली वो तो ऑडिटर के रेजिग्नेशन की बात है। बाकी हर पॉइंट पे पहले कंपनी को शेड्यूल 3 में अपना ये डिस्क्लोजर देना है, और उसके बाद ऑडिटर ये डिस्क्लोजर देगा। और एक बात मैं आपको और बताऊं, वर्ल्ड ओवर ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर बीइंग एनहांस्ड। अब मैं ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का चेयरमैन हूँ और सस्टेनेबिलिटी बोर्ड का चेयरमैन हूँ इशू हमारे ICI में। तो वर्ल्ड ओवर एक डिबेट है एक्सपेक्टेशन गैप जिसको बोलते हैं। एक्सपेक्टेशन गैप है कि सोसाइटी हमसे क्या एक्सपेक्ट करती है और हम क्या डिलीवर कर रहे हैं। हम अपनी जगह सही होंगे, क्योंकि एक कोर्ट का जजमेंट आया, ऑडिटर इज अ वॉच डॉग एंड नॉट अ ब्लड डॉग। हम हर जगह उसी चीज को कोट करते हैं, लेकिन खाली उससे काम चलने वाला है। अब सोसाइटी के जो एक्सपेक्टेशन है वो बदली है। आप 2013 की मोदी जी की स्पीच सुनी है, जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने एक चीज कही कि देखिए
और हमारे वेस्टर्न इंडिया रीजनल काउंसिल के किसी ब्रांच के फंक्शन में उन्होंने बात कही कि देखिए आज एक डॉक्टर किस लिए जाना जाता है सोसाइटी में, कि वो सोसाइटी को सर्व करता है। एक सोल्जर किस लिए जाना जाता है, कि वो देश की रक्षा करता है। हमें किस लिए जाना चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को किस लिए जाना चाहिए, ये हमारे लिए इंट्रोस्पेक्शन की बात है। अगर एक पेंशनर या एक आम आदमी अपने 5,000 रुपए किसी कंपनी के शेयर में लगाता है और वो कंपनी डूब जाती है तो उसका पैसा डूब जाता है, तो एज चार्टर्ड अकाउंटेंट वी आर द फाइनेंशियल सोल्जर ऑफ आवर कंट्री and it is our duty that we carry out audit with full diligence and wherever it requires to be qualified we qualify. और पूरे यूरोपियन यूनियन में आज ये बात चल रही है कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ाई जाएं. They are also looking at enhancing the auditor responsibility and they are also learning from our Caro. कुछ पॉइंट्स जो हमारे कारो में हैं वो शायद फ्यूचर में वहां भी आएंगे. अब इंडिया जो है वो वर्ल्ड लीडर है, फॉलोअर नहीं है, तो इसलिए अब हम वो चेंजेस कर रहे हैं. हम एक्सपेक्टेशन गैप पे भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं हमारे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड में कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और सोसाइटी की जो एक्सपेक्टेशन है उसमें जो गैप है उसको कहाँ तक फिल किया जा सकता है और कैसे फिल किया जा सकता है. देखिए अब 50 क्लॉजेस जैसा कि मैंने कहा नई कारों में है, जिसमें से 28 नई रिक्वायरमेंट है, 15 रिक्वायरमेंट एग्जिस्टिंग मॉडिफाई हुई, 8 एज इट इज चल रही हैं पहले वाली, और एक रिक्वायरमेंट डिलीट की गई है जो कि पहले मैनेजरियल रेम्यूनरेशन कारों में भी डिस्क्लोज करना होता था और ऑडिट रिपोर्ट में भी करना होता था. अब वो सिर्फ एक ही जगह आएगा, वो सिर्फ कारों में आएगा. तो ये चेंज जरूर हुआ है. राजेश भाई शायद स्क्रीन चली गई है ना? हाँ नहीं अब इस पे आ रही है, स्क्रीन तो आ रही है लेकिन यू आर शेयरिंग स्क्रीन करके आ रहा है. तो मैं इसको दोबारा करता हूँ. क्या भाई इसमें बीच में एक टीम्स कॉल आ गई, तो टीम्स कॉल आने से वो गड़बड़ हो जाता है. हाँ जी सर आ गई अब स्क्रीन. अभी आ गई? यस सर, यस सर. अब दिख रहा है कारो? बिल्कुल दिख रहा है सर. चलिए सर, अभी भी ये मुझे तो डाउनलोडिंग ही दिखा रहा है, तो एक बार देखते हैं. नहीं डाउनलोडिंग प्रोसेस में है लेकिन कारो भी दिखा रहा है हमें. हाँ चलिए हो गया सर, हो गया. तो ये 50 क्लॉजेस, सब क्लॉजेस और सब क्लॉजेस हैं. और शेड्यूल 3 में जैसे मैंने कहा बहुत एक्सटेंसिव चेंजेस हुए. गाइडेंस नोट हमने कारो का लाए हैं हम पिछले साल ही गाइडेंस नोट आ गया था कारो पे. और जो क्लॉज एक रूल 11E और F बाद में ऐड हुआ उस पर अभी आपके AASB ने ऑलरेडी जो है एक इम्प्लीमेंटेशन गाइड निकाली. और राजेश भाई मैं आपको बताऊं, हमने वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्वेरी सॉल्विंग प्रोग्राम एक लिया है. हमने कहा है कि किसी भी ऑडिटर को 14 लाख कंपनियां हैं, एक बार तो हमें सोचा यार ये करें कि ना करें. 14 लाख कंपनियों के ऑडिट में या किसी पार्टनरशिप फर्म के ऑडिट में अगर किसी ऑडिटर को कोई क्वेरी है ऑडिट से रिलेटेड, तो हमने एक एक्सपर्ट पैनल बनाया जिसमें 50 एक्सपर्ट्स हैं इंडिया से. वो उन क्वेरीज का आंसर देंगे 24 से 48 आवर्स के अंदर. ऑफ कोर्स कुछ क्वेरी ऐसी हो सकती हैं जिनका आंसर हम किसी पर्टिकुलर रीजन से ना दें, लेकिन अदरवाइज किसी भी मेंबर को कोई वो क्वेरी रेज करता है ऑडिट से रिलेटेड तो उसका आंसर मिलेगा. ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट प्रोजेक्ट है जो आपके ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने लिया और ये काफी बड़ी इसको न्यूज कवरेज भी मिली. इससे ऑडिट क्वालिटी एनहांसमेंट होगा. तो अगर आपका ऑडिटिंग मैटर को लेके कोई अगर डाउट है तो आप हमारे एक्सपर्ट पैनल को लिखिए. इस एक्सपर्ट पैनल को एक्सपेंड करने की जरूरत होगी तो हम एक्सपेंड भी करेंगे. और ये एक्सपर्ट पैनल 16 अप्रैल 2022 से 30 सितंबर 2022 तक ऑपरेशनल है. तो आप इसका जरूर फायदा उठाइए, कोई इसकी फीस नहीं है. अभी आज तो एक पुलिस इंस्पेक्टर ने भी एक ऑडिट क्वेरी लिखी हुई है उसमें किसी केस के सिलसिले में,
बट हमने कहा ये हमारे मेंबर्स के लिए है, नॉन मेंबर्स के लिए नहीं है। तो एक हमारा इसके साथ गाइडेंस नोट ऑन इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, उसको भी आप जरूर ध्यान में रखें जब आप ऑडिट करें। एंड राजेश भाई, मेरे ख्याल अब तो एक फिजिकल प्रोग्राम भी जो है ना, ये नई रिक्वायरमेंट्स पे आप कर सकते हैं। ठीक है सर, श्योर सर, श्योर। अब बात आती है कि कारो क्यों चेंज हुआ। देखिए, कारो के चेंज होने का, जैसे जब भी कोई बड़ा कोई इशू सामने आता है, तब बात होती है कि लॉ में बदलाव लाया जाए, और ये बदलाव इस कारो 2020 की फॉर्म में डिस्कस हुआ। उस टाइम के जो एमसी सेक्रेटरी थे इंजेटी श्रीनिवास, उनका एक कोट बड़ा फेमस हुआ कि इफ देयर इज अ नीडल इन अ हेस्टैक, इफ देयर इज अ नीडल इन अ हेस्टैक, यानी कि अगर भूसे के ढेर में एक सुई गुम हो गई है तो हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि ऑडिटर ढूंढे, बट इफ देयर इज एन एलिफेंट इन द रूम और वो कहे वो मुझे दिखा नहीं, तो वो हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मैसेज बड़ा क्लियर था कि छोटी छोटी गलतियां जिनको ढूंढना मुश्किल हो, हम उनको नहीं देख रहे, लेकिन अगर ब्लंडर्स हैं, बड़ी गलतियां हैं और आपको नहीं दिखी, तो सर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे ये चीज। तो इस बैकग्राउंड में कारो आया, और बहुत सारी बैकग्राउंड थी। लास्ट मिनट ऑडिटर रेजिग्नेशन, ऑडिटर रिजाइन करने लगे। कोई कहता मेरी हेल्थ खराब है, कोई कहता मुझे टाइम नहीं है, कोई कुछ और रीजन देने लगा। तो उन्होंने कहा जो ये कहे कि मेरी हेल्थ खराब है या टाइम नहीं है, उसको कहो बाकी ऑडिट करना भी छोड़ दो। भाई अगर टाइम नहीं है तो टाइम नहीं है, अच्छी बात है। हेल्थ खराब है तो खराब है, हेल्थ का ध्यान रखिए, फिर ऑडिट मत कीजिए, पर बीच में रेजिग्नेशन मत दीजिए। अगर देते हैं तो उसके अप्रोप्रिएट रीजन होने चाहिए। ये रीजन आपको परमिटेड है जो हम बता रहे हैं। तो इंस्टीट्यूट ने भी इस पे गाइडेंस निकाली कि अगर आप रिजाइन करते हैं तो ये आपकी ड्यूटीज बनती हैं। फिर साथ में बात आई इंटरनल ऑडिटर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए, और उससे रिलेटेड एक क्लॉज भी कारो में डाला। फिर एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स हो रही थी। एक लोन को रीपे करना है, 15 मार्च को ड्यू है, पैसे हैं नहीं, 10 मार्च को किसी और बैंक से लोन ले लिया और वो पैसे दे दिए। अब इसमें लोगों ने पूछा जी कितने दिन पहले लोन लेना चाहिए ताकि एवरग्रीनिंग ना हो। सो अगर आप सब्सटेंस पे जाएं, अगर कंपनी के पास वो लोन रीपे करने के पैसे नहीं है, दूसरा लोन लेने के अलावा कोई चारा नहीं है, तो ये एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स है। फिर लोन्स एंड एडवांसेस टू रिलेटेड पार्टी के डिस्क्लोजर को स्ट्रेंथन किया गया। गोइंग कंसर्न इश्यूज आ रहे थे, उसको एड्रेस करने के लिए कारो में कई क्लॉजेज आए। फिर विसल ब्लोअर कंप्लेंट्स को एग्जामिन करना ऑडिटर के लिए मैंडेटरी नहीं था, उसको लाया गया। और सीएसआर, सीएसआर में अगर एक कंपनी ने पैसा स्पेंड नहीं किया तो उसको अब एक स्पेशल फंड में लेके जाना होता है। तो उससे रिलेटेड भी गवर्नमेंट जो थी वो बड़ी सीरियस थी। उन्होंने कहा इस पे भी हमें एक स्पेसिफिक रिपोर्टिंग जो है हमारे ऑडिटर से चाहिए। तो इंस्टीट्यूट की तरफ से भी हमने गाइडेंस नोट कारो पे निकाला। बहुत ही डिटेल्ड गाइडेंस नोट्स है फ्रेंड्स। मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इसको जरूर पढ़िएगा। अगर आप कारो पे रिपोर्ट दे रहे हैं तो सर इसको पढ़िएगा। पढ़ने में 2 दिन जरूर लगेंगे। खाली पीपीटी पे मत जाइएगा। पीपीटी में सर हम पूरा गाइडेंस नोट नहीं पढ़ा सकते, सिर्फ हाइलाइट्स पढ़ा सकते हैं। और इसमें हमने इलस्ट्रेटिव चेकलिस्ट भी दी है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बनाए हैं। अपनी तरफ से हर तरह से कारो 2020 को समझाने की कोशिश की है। आज तक कारो 2020 पे कम से कम 200 प्रोग्राम्स भी हो चुके हैं, इंस्टीट्यूट की साइड से, ब्रांचेस की साइड से, सीपी स्टडी सर्कल्स की साइड से। और जितने वेबिनार हुए हैं वो सारे के सारे अवेलेबल हैं, आप किसी को भी रेफर कर सकते हैं। बट फाइनली जजमेंट जो है वो आपका है। तो अगर आप ये कारो को हमने एनालाइज करके देखा तो कारो में 50 क्लॉजेस हैं। 14 क्लॉजेस में तो आपको एक ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट बतानी है, ये है या ये नहीं है। 36 क्लॉजेस में आपको जजमेंट एक्सरसाइज करना है कि आपकी ओपिनियन में क्या है। तो 14 प्लस 36 ये 50 क्लॉजेस आपको एनालाइज करनी है, और आपको अपनी ऑडिट रिपोर्ट लिखनी है कारो की। देखिए, ऑडिट रिपोर्ट के 3 पार्ट्स होते हैं। मेन ऑडिट रिपोर्ट, इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग
एंड कारो 2020। एक बार मुझसे किसी ने कहा कि जी एक एनेक्शर ही तो लगाना भूल गए, ICFR हाई एनेक्शर होता भूल गए। नहीं सर, आपने रिपोर्ट ही पूरी नहीं दी, इसका मतलब तो वो आपको देना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, मेरा एक सिंसियर एडवाइस है कि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड जरूर पढ़ें। 46 ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं हमारे। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड पे इंस्टीट्यूट ने बुकलेट भी निकाली हुई है, वेबिनार्स भी रखे हैं। अब हम 5-5 मिनट का वीडियो भी निकाल रहे हैं ऑडिटिंग स्टैंडर्ड पे, जिसमें उसकी ब्रीफ रिक्वायरमेंट होगी, और हम इस पे वेबिनार भी कर रहे हैं। हमने जब से मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मार्च 2022 में मुझे मिली, हमने अभी तक 27 प्रोग्राम किए हैं ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के मैटर्स पे। सो आप इसका जरूर फायदा उठाएं। राजेश भाई, स्क्रीन फ्रीज तो नहीं हो गई है? ये चल, हाँ आप फ्रीज हो गई सर, फ्रीज हो गई सर। अच्छा, नहीं, पर आवाज आ रही है ना? हाँ आवाज आ रही है सर, आ रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली ये हम 15 मई तक सारे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को कवर कर लेंगे अपने वेबिनार्स में, और फिर कारो पे भी वेबिनार करेंगे। रूल 11E और F पे भी करेंगे। कारो पे आज भी ये वेबिनार हो रहा है, कल भी मैंने मयूर विहार स्टडी सर्कल में कारो पे ही बोला है। तो वेबिनार्स की कोई कमी नहीं है, लेकिन ये जरूरी है कि हम उनको अच्छी तरह से पढ़ें, समझें और उसके हिसाब से अपनी ऑडिट रिपोर्ट दें। अब हम एक एक क्लॉज की बात करेंगे कि हमारी क्या ये नई और एनहांस जो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट आई है। और इस पे मैं ये भी कहूँगा कि आप छोटे छोटे क्वालिटी सर्कल, जैसे स्टडी सर्कल का क्या मतलब है, देखिए सर्कल का मतलब है एक सर्कल में बैठ के चीजों को डिस्कस करना। इसीलिए इनका साइज भी छोटा रखा जाता है कि ताकि हम थ्रेडबेयर डिटेल में चीजों को डिस्कस करें। तो मैं तो एनकरेज ये करूंगा कि हम छोटे छोटे ग्रुप बनाएं, 30-30, 40-40 लोगों के ग्रुप बनाएं, या 20 लोगों के ग्रुप बनाएं, किसी के ऑफिस में भी बैठ जाएं और हर आदमी को 2-2 क्लॉजेस तैयार करने के लिए बोलें कि भाई इसमें गाइडेंस नोट की 2 क्लॉज तू पढ़ेगा, 2 तू पढ़ेगा, 2 तू पढ़ेगा, ये 50 हो गई, और इस पे हम डिस्कशन करेंगे। उस पर डिटेल डिस्कशन करिए, पूरा एक दिन लगा के डिस्कशन करिए, और तब जो है मुझे लगता है कि हम इस पे जस्टिस जो है कर पाएंगे। कारों की रिक्वायरमेंट इतनी एक्सटेंसिव रिक्वायरमेंट है, तो ये रिक्वायरमेंट मैं अब डिटेल में डिस्कस करूंगा। राजेश भाई, उससे पहले 2 मिनट का ब्रेक जैसे मैंने कहा था, ठीक है मैं सर, मुझे प्लीज प्लीज सर, लेना प्लीज। पड़ेगा, तो मैं 2 मिनट नो के लिए। प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। थैंक यू। सभी मेंबर से रिक्वेस्ट है कि वो बने रहें। सर अभी गाड़ी में बैठ करके लॉग इन करेंगे अगेन विद इन 2 मिनट्स, और वी विल कंटिन्यू इट। इन बीच हमारे जगजीत जी जो कि नॉर्दर्न इंडिया रीजनल काउंसिल के न्यूली इलेक्टेड मेंबर हैं, यदि कोई अपनी बात रखना चाहें, कुछ कहना चाहें, तो मोस्ट वेलकम सर। नमस्कार सर, राधे राधे सभी को सर। मैं तो बस यही कहूंगा सर, ये जो आज का जो टॉपिक है संजीव सर ऑलरेडी ले रहे हैं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसा सर ने बताया, so many changes in this Caro 2020 and very relevant. Even सर उसको डिटेल में बताएंगे, देन वी हैव अनदर अमित जैन जी उसको आगे एक्सटेंड करेंगे। वेरी रेलिवेंट, क्योंकि मैंने कल भी, जैसे मैं बात कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले, कि हमारी वर्कशॉप थी कल इसी टॉपिक के ऊपर, FRR PB उसके ऊपर भी थी, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिव्यू बोर्ड के ऊपर। तो उसमें बहुत सारी ऐसी एरर्स हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट के पिछली बैलेंस शीट में जो भी रिपोर्टिंग की है वो एरर्स दिख रही हैं। स्टॉक की वैल्यूएशन से रिलेटेड, अगर ट्रेडिंग कंसर्न की बात करें या मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, तो बहुत सारी चीजें रेलिवेंट है। सर आ गए सर, वेलकम सर। यस यस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू राजेश भाई वेलकम सर, वेलकम बैक करने के लिए। तो मैं अब अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, और इतने जो जी ने बताया वो मैं सुन रहा था, बहुत रेलेवेंट चीजें इन्होंने बोली हैं, और हम सब उसका ध्यान रखें। सर राजेश भाई, स्क्रीन दिख रही है? यस सर, यस सर, यही वाली आ रही है, कारो वाली? बिल्कुल कारो वाली आ रही है। ठीक है सर।
तो सर अब इन रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं। मैं पहले इन्वेंट्री से ये जो रिक्वायरमेंट है इसको शुरू करता हूँ। कोई बहुत नई रिक्वायरमेंट नहीं है, थोड़ा सा चेंज इस रिक्वायरमेंट में हुआ है। देखिए, एक तो फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री जो है वो रीजनेबल इंटरवल पे मैनेजमेंट ने किया है कि नहीं, हमें ऑब्जर्व करना होता है फिजिकल वेरिफिकेशन। हम लोग कई बार करते नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम फिजिकल वेरिफिकेशन को ऑब्जर्व करें। और अगर 10% से ज्यादा की डिस्क्रिपेंसी है फॉर ईच क्लास ऑफ इन्वेंट्री, then we are supposed to report whether they have been properly dealt with in the books of accounts or not. देखिए, मैं इसके ऑपरेशनल मैटर पर आऊं तो ये हमने कई बार ऑडिट रिपोर्ट्स में, जैसे जगजीत जी ने कॉमनली ऑब्जर्व्ड एरर्स की बात की है, तो उसमें भी अगर हम देखें क्या होता है, हमने बहुत सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसे देखे हैं जिसमें लिखा होता है इन्वेंट्रीज एज वैल्यूड एंड सर्टिफाइड बाय द मैनेजमेंट। तो सर हमने उसमें क्या किया? हमने तो उसमें कुछ नहीं किया। हमारा रोल जो था, हमारा रोल अगर मैनेजमेंट के कहने पे ही था तो हमें ऑडिट करने की जरूरत ही नहीं थी। सो अगर ये लिखा है, देखिए अगर हम मैनेजमेंट के इवैल्यूएशन से सेटिस्फाइड हैं तो इस क्लॉज की जरूरत नहीं है, और सेटिस्फाइड अगर नहीं है तो हमें क्वालिफिकेशन उसमें देनी चाहिए। तो ये बहुत ज्यादा हमने देखा है कि इशू आता है डेटर्स में और इन्वेंट्री में, जिसमें लिखा जाता है एज वैल्यूड एंड सर्टिफाइड और एज रिकंसाइल्ड बाय मैनेजमेंट, या हम बोलते हैं कि जी डेटर्स आर अनरिकंसाइल्ड, अनकन्फर्म्ड। तो उन सब से जो है काम अब नहीं चलेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है सर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैं कहता हूँ पूरे कारो में जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट वाली क्लॉज है उसमें से ये एक है, वर्किंग कैपिटल लिमिट। देखिए हमारा एसएससी जो है वर्किंग कैपिटल लिमिट लेता है। अगर उसकी वर्किंग कैपिटल सैंक्शन लिमिट 5 करोड़ रुपए से ऊपर है, सैंक्शन की बात की मैंने, यूटिलाइजेशन की बात नहीं। अगर सैंक्शन लिमिट 5 करोड़ से ऊपर है, उसको क्वार्टरली रिटर्न्स तो देनी ही होती है, बैंक में डीपी स्टेटमेंट देनी होती है। तो एक बड़ा सिंपल सा काम ऑडिटर को तो करना है कि भैया जो क्वार्टरली रिटर्न्स बैंक में दी थी वो बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच करती हैं कि नहीं करती हैं, फैक्चुअल स्टेटमेंट लिखना है। तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं राजेश भाई, वो तो सारी बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच होती ही होंगी। तो इसलिए गवर्नमेंट ने सीधा सा सवाल पूछा कि भाई ये बता दो कि जो इन्होंने बैंक में स्टॉक एंड डेटर स्टेटमेंट दी वो बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच करती थी कि नहीं करती थी। अब इसमें कई क्वेश्चन आने लगे। मैं कहीं एक ब्रांच में गया, उन्होंने कहा जी देखो एक्चुअली में तो होता नहीं स्टॉक, एक्चुअली में तो डेटर भी नहीं होते, तो हम क्या लिखें? मैंने कहा आप क्या लिखें, क्लॉज तो ये कहती है कि बुक से मैच करती है कि नहीं करती है। अब आप देखिए, आपने इन्वेंट्री वेरिफिकेशन भी किया होगा साल में एक बार, और बोले अच्छा। फिर दूसरा आर्गुमेंट आया कि अनलिस्टेड एंटिटी का ऑडिट तो साल में एक बार होता है, तो हम तो क्वार्टरली होते नहीं, तो हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें? बिल्कुल ठीक है, हमें ईयर एंड की तो पता है ना, तो बैकवर्ड रिकंसिलेशन तो हो ही सकता है परचेज और सेल के थ्रू, तो वो आपको करना पड़ेगा। तीसरा ये आया कि जी अगर देखिए वो तो एस्टिमेटेड देते हैं, बाद में अगर उन्होंने ठीक कर दी तो बाद वाली मान लें, तो आंसर सर वो नहीं है। आपको तो बैंक से सर्टिफाइड कॉपी लेनी चाहिए कि आपके पास कौन सी जो स्टेटमेंट्स आई हैं उनकी कॉपी हमें दीजिए, सर्टिफाइड कॉपी मैनेजमेंट के थ्रू लीजिए, और ये देखिए ये बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच होती हैं या नहीं होती हैं। अगर कोई मटेरियल डिफरेंस है तो मैनेजमेंट को भी डिस्क्लोज करना है अपने शेड्यूल 3 में, और ऑडिटर को भी डिस्क्लोज करना है। और सर आप ये मान के चल लीजिए, अगर ये डिफरेंस हुआ तो एक्शन होगा, ऑडिटर पे नहीं कंपनी पे। अगर ऑडिटर ने रिपोर्ट कर दिया तो कंपनी पे, नहीं रिपोर्ट किया तो ऑडिटर पे। तो चॉइस हमारी, हमें पहले अपना सीओपी देखना चाहिए सर। और इसीलिए ये जैसे मैंने कहा ये फैक्चुअल स्टेटमेंट है, फैक्चुअली बताना है बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच होती है या नहीं होती। दूसरा, ये क्लॉज में जजमेंट लगा है ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल रेशियोज
aging and expected dates of realization of financial assets and payment of financial liabilities, यानी कि रेशोज अब शेड्यूल 3 में 11 रेशो डिस्क्लोज करनी है। 11 रेशोज के अलावा उनका प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन भी देना है, और अगर उसमें 25% से ज्यादा का चेंज आया है तो उसके रीजन भी एक्सप्लेन करने हैं। चेंज आ सकता है, ऐसा नहीं कि चेंज नहीं आ सकता, लेकिन अगर आया है तो वो एक्सप्लेन भी करना है। तो ये जो रिक्वायरमेंट है, ये इसके बेसिस पे, रेशोज के बेसिस पे, फाइनेंशियल एसेट्स और फाइनेंशियल लायबिलिटीज की एजिंग के बेस पे, उनकी एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन की डेट के बेस पे, और कोई इंफॉर्मेशन जो ऑडिटर की नॉलेज में आई हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से इंटरेक्शन करके उनकी रिपोर्ट देख के, मैनेजमेंट प्लान को देखते, वेदर द ऑडिटर इज ऑफ द ओपिनियन दैट नो मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट as on the date of audit report, that company is capable of meeting its liability existing at the date of balance sheet date as and when they fall due within a period of 1 year from the balance sheet date. ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने ऑडिट रिपोर्ट दी और अगले दिन कंपनी बंद, वो नहीं होना चाहिए सर। तो आप अपनी बेसिस पे देखिए, और आपको लगता है कंपनी की एबिलिटी नहीं है तो आप उसमें लिखिए कि नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। इंटरनल ऑडिट सिस्टम, whether the company has an internal audit system commensurate with the size and nature of its business, तो आपको बताना है कि कंपनी में इंटरनल ऑडिट सिस्टम है कि नहीं, और है तो कंपनी के साइज को देखते हुए, इसके बिजनेस को देखते हुए एडिक्वेट है कि नहीं। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि हर कंपनी के तो में तो इंटरनल ऑडिट की जरूरत होती नहीं, वो तो थ्रेशोल्ड है 200 करोड़ की टर्नओवर से ऊपर, या लिस्टेड कंपनी हो। तो अगर कंपनी को रिक्वायर्ड नहीं है इंटरनल ऑडिट, तो हमें तब भी असेसमेंट करनी चाहिए। तो ऑडिटर अपनी असेसमेंट दे कि भाई यहाँ इंटरनल ऑडिट सिस्टम नहीं है, और साथ में ये भी बताए कि वो इंटरनल ऑडिट सिस्टम इनको मैंडेटरी रखना है, जरूरी भी नहीं। ऐसी जो इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट्स आती हैं, ऑडिटर के लिए देखना जरूरी है, उनकी कॉपी लेनी जरूरी है, और उसको ऑडिटर इंटरनल ऑडिट से डिस्कस भी करना चाहिए, प्लान भी डिस्कस करना चाहिए कि ये आपने अगले 3 साल में, 2 साल में ये एरियाज अगर आप कवर करेंगे तो वो अच्छा रहेगा। डिस्क्लोजर ऑफ कैश लॉसेस, ये एक ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट है कि क्या कंपनी का इस साल में और पिछले साल में कोई कैश लॉस तो नहीं हुआ। और ये कैश लॉस, ये पहले भी रिक्वायरमेंट होती थी, अब ये रीइंट्रोड्यूस की गई है। और एक चीज और बताऊं, अगर एक कोई क्वालिफिकेशन थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो कंपनी के प्रॉफिट या लॉस के फिगर को एडजस्ट करना चाहिए, और उसके बाद देखना चाहिए कि कैश लॉस है या नहीं है। एक और ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्लॉज इंसर्ट हुई है, और काफी वाइड इसका स्कोप है। वेदर ड्यूरिंग द ईयर कंपनी हैज मेड इन्वेस्टमेंट्स इन और प्रोवाइडेड एनी गारंटी और सिक्योरिटी or granted any loans or advances in the nature of loans, secured or unsecured, to companies, firms, limited liability partnership or any other parties. If so, तो आपने बताना है कि उसमें से सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर और एसोसिएट्स को कितना दिया और बाकियों को कितना दिया। ये क्लॉज एनबीएफसी पे एप्लीकेबल नहीं है, या जिसका काम ही लोन देना हो। तो अब आप देखिए, पहले जो रिक्वायरमेंट्स होती थी ना, सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर और एसोसिएट्स पे होती थी, फिर लोगों ने रास्ते निकालने शुरू कर लिए, वहां से एंट्री घुमानी शुरू की, तो इसलिए गवर्नमेंट अब ये सबके लिए ले आई है। एक और क्लॉज, whether the investment made, guarantees provided, security is given, and the terms and condition of grant of all loans and advances in the nature of loans and guarantee provided are not prejudicial to the company's interest. मतलब आपने जितने भी लोन दिए हैं, जिस मर्जी को दिए हैं, वो कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट तो नहीं है। पता चले आपने 8% पे बोरो किया और दे रहे हो 6% पे, और इसमें भी सिर्फ रिलेटेड पार्टी वाला स्कोप हटा दिया, क्योंकि ऐसा होने लगा होगा कि आपने अपनी रिलेटेड पार्टी को ना देके किसी और को दिया, और वहां से कहा कि मेरी रिलेटेड पार्टी को दे दे, तो वो सब की सब क्लॉजेस इसमें कवर कर ली, और एनबीएफसी को भी इसके अंदर कवर कर दिया। अगला एक और बड़ा एडिशन हुआ, शेड्यूल ऑफ पेमेंट, रेगुलरिटी ऑफ पेमेंट एंड अमाउंट ओवरड्यू।
वो कहते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन्स और एडवांसेस इन द नेचर ऑफ लोन, लोन हो या एडवांस हो जो नेचर लोन में हो, जैसे किसी ने कहा भी ये 10 करोड़ भेज देना और बाद में 6 महीने बाद वो ऑर्डर कैंसिल कर दिया पर एडवांस 100% दे दिया, तो सर ये एडवांस तो है ना अकोमोडेशन बिल की तरह है, ये तो इन द नेचर ऑफ लोन है। तो उन केसेस में और लोन के केसेस में ये बताना है whether the schedule of payment of principal and amount of interest has been stipulated। कई बार लोग लिखते ही नहीं, तो कहते हैं जी मैंने दिया भी नहीं, उसने कुछ लिखा नहीं था। तो पहले तो ये बताना है कि वो स्पेसिफाइड है कि नहीं, और दूसरा ये बताना है कि रेगुलर पेमेंट हो रही है कि नहीं हो रही, और अगली क्लॉज में ये बताना है कि अमाउंट अगर ओवर ड्यू है, अगर 90 दिन से ज्यादा ओवर ड्यू है जैसा बैंक में होता है, तो कितना अमाउंट ओवर ड्यू है 90 दिन से ज्यादा, और रीजनेबल स्टेप्स लिए गए हैं कि नहीं उस प्रिंसिपल को और इंटरेस्ट को रिकवर करने के लिए। अगला आया एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, जो मैंने शुरू में बात की कि वेदर एनी लोन और एडवांस इन द नेचर ऑफ लोन ग्रांटेड व्हिच हैज फॉलन ड्यू ड्यूरिंग द ईयर, कोई ऐसा लोन एडवांस जो इस साल ड्यू हुआ हो, हैज बीन रिन्यूड और एक्सटेंडेड और फ्रेश लोन्स ग्रांटेड टू सेटल द ओवरड्यूज ऑफ एग्जिस्टिंग लोन गिवन टू द सेम पार्टी, उसका रिन्यूअल कराया हो, उसको एक्सटेंशन कराया हो, फ्रेश लोन लिया गया हो, तो वो सब इसमें कवर हो जाएगा और उसकी डिटेल देनी होगी। अगेन ये एनबीएफसीज के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो राजेश जी जैसे वो हिरण्यकश्यप के केस में प्रहलाद वाला था ना, वो ना दिल में ना हाथ में, और फिर भी वो हो गया था, तो यहाँ पे हर तरफ से इसको कवर करने की कोशिश गवर्नमेंट ने की है। एक और क्लॉज लाए, लोन्स और एडवांसेस रीपेबल ऑन डिमांड और विद नो स्टिपुलेशन। इस क्लॉज में है वेदर द कंपनी हैज ग्रांटेड एनी लोन्स और एडवांसेस इन द नेचर ऑफ लोन्स आइदर रीपेबल ऑन डिमांड, कि भाई जब हम डिमांड करेंगे तब दे देना, और विदाउट स्पेसिफाइंग एनी टर्म्स और पीरियड ऑफ रीपेमेंट। क्योंकि इसमें क्या होता था, इसमें होता था लोग इसका मिसयूज करते थे, डिमांड लोन है लेकिन 10-10 साल तक पेमेंट नहीं होता था और इसको नॉन करंट लायबिलिटी दिखाते थे। तो अब उसका डिस्क्लोजर करना होगा, और उसमें से कितना लोन प्रमोटर्स या रिलेटेड पार्टी को दिया है वो अलग से डिस्क्लोजर करना। अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन, आपका एरिया भी आ गया राजेश जी, इसमें आहूजा सर का भी आ गया। Whether any transaction not recorded in the books of accounts has been surrendered or disclosed as income during the year in the tax assessment under the Income Tax Act. If so, whether the previously unrecorded income has been properly recorded in the books of accounts. मतलब पहले तो अगर कोई इनकम सरेंडर किया तो किसी को पता नहीं चलता था, अब सारी दुनिया को बताना है कि इन्होंने इनकम सरेंडर की या डिस्क्लोज किया, तो ये इसके अंदर आएगा। हाँ, अगर कोई एडिशन की है इनकम टैक्स अथॉरिटी ने और कंपनी ने उसको डिस्प्यूट किया है, तब नहीं, तब ये इस क्लॉज में फॉल नहीं करेगा। बट कंपनी ने कोई वॉलंटरली इनकम सरेंडर की है तो वो इसमें आएगी, और अलग से कंपनी को शेड्यूल 3 में डिस्क्लोज करना है और फिर ऑडिटर को डिस्क्लोज करना है। वो कहते हैं जब किया तो सारी दुनिया को भी बताओ। फ्रॉड, whether any fraud by the company or any fraud on the company has been noticed or reported during the year. If yes, the nature and amount involved is to be indicated. देखिए पहले होता था ऑफिसर या एम्प्लॉय ने किया था, अब वो हटा दिया, अब कहते किसी ने भी किया हो, या तो कंपनी पे फ्रॉड हुआ या कंपनी ने फ्रॉड किया। अगर आपने नोटिस किया है या रिपोर्ट है कोई फ्रॉड ऐसा है, तो उसका नेचर और अमाउंट यहाँ पर जो है वो आप डिस्क्लोज कीजिए। एंड नेचुरली ये एस्टेब्लिश फ्रॉड रिपोर्ट करना होता है, सस्पेक्टेड फ्रॉड रिपोर्ट नहीं करना होता है। फिर इसकी फाइलिंग भी करनी है। अगर कोई फ्रॉड मिला है तो 143(12) में उसको रिपोर्ट भी करना है गवर्नमेंट को। सर यहाँ सर 1 मिनट के लिए रोकूंगा, यहाँ जहाँ फ्रॉड की बात कर रहे हैं हम लोग, सर ये जीएसटी जो कि बिल्स जो पकड़े जा रहे हैं कंपनीज में भी, लेकिन वहाँ एसएससी ने प्रॉपर चैनल से प्रॉपर बिल्स लिए हुए हैं, कोई वो नहीं है, फिर भी जीएसटी अथॉरिटी कहते हैं नहीं यू पे सच एंड सच टैक्स जीएसटी एंड गो। तो उस केस में फॉर द बाइंग ऑफ पीस एंड टाइम इफ द एसएससी पेड द जीएसटी अमाउंट
and agree with the GST department, and whether this transaction will cover under fraud? देखिए, पहली बात तो ये अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन में तो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये इनकम टैक्स से रिलेट करता है, ठीक है ना। अब बात आती है कि ये फ्रॉड है कि नहीं। राजेश भाई, मुझे एक चीज बताओ, अगर कंपनी ने जेन्युइन ट्रांजैक्शंस करी हैं, पूरा जीएसटी डिपॉजिट किया है, तो वो क्यों एक्सेप्ट करेगी टू बाय पीस? सर बहुत छोटे छोटे मीगर अमाउंट है उस केस में सर, देखिए, या तो जीएसटी डिपार्टमेंट से लड़ो। देखिए, अगर इममेटीरियल अमाउंट है, छोटे छोटे हैं, तो कोई बात नहीं, ठीक है ना, तब तो ठीक है। लेकिन अगर मेटीरियल अमाउंट है तो सर फ्रॉड बाय दी कंपनी तो है। ठीक सर, बिल्कुल है, क्योंकि फ्रॉड की डेफिनेशन जो सेक्शन 447 में है वो बहुत वाइड डेफिनेशन है। उसमें रेवेन्यू अथॉरिटीज, स्टेक होल्डर्स, क्रेडिटर, लेंडर, किसी को भी किया हो सब इसके अंदर आ जाता है। अब विसल ब्लोअर कंप्लेंट्स, कई बार कंपनीज में एनोनिमस कंप्लेंट्स आती हैं, बाय नेम भी कंप्लेंट्स आती हैं। लिस्टेड कंपनीज के लिए तो विसल ब्लोअर कंप्लेंट मैकेनिज्म बनाना मैंडेटरी है। उनको एक ऑम्बुड्समैन रखना चाहिए और अलग से उस पे वो कंप्लेंट्स आए। अगर नहीं है और लिस्टेड कंपनी का ऑडिटर, तो वो ये लिखेगा कि सिस्टम नहीं है इनके यहाँ विसल ब्लोअर कंप्लेंट्स का, और अगर है तो उसको वो कंप्लेंट्स एग्जामिन करनी है कि कंपनी ने उस पर क्या एक्शन लिया। अब क्वेश्चन ये आता है, अगर किसी कंपनी के लिए विसल ब्लोअर मैकेनिज्म मैंडेटरी नहीं है तो क्या करना है? तो सर उस केस में यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। और अभी सर नो क्लियर आ रहा है, नो क्लियर है नॉन कंप्लायंस विद अदर एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशन, जिसके अंदर अब ये हम इसको अगले साल से मैंडेटरी करेंगे, मतलब ड्यूरिंग द ईयर मैंडेटरी करेंगे, तो अगले साल की रिपोर्ट्स में आएगा या उसके अगले साल की में आएगा। और अभी लिस्टेड कंपनी से करेंगे कि ऑडिटर को बाकी किसी लॉ का वायलेशन भी मिला तो उसको वो भी रिपोर्ट करना है। उसको ब्राइबरी और करप्शन के इंस्टेंसेस भी रिपोर्ट करने हैं। अगर कंपनी ने ब्राइबरी दी या ली या करप्शन में इन्वॉल्व हुई तो वो भी ऑडिटर को रिपोर्ट करना है नो क्लियर के अंदर। नेक्स्ट है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहले कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कारो नहीं लगता था। अब एक छोटा सा चेंज आया कि आप उसमें अपनी सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर सबकी ऑडिट रिपोर्ट देखो, और अगर उनमें कहीं क्वालिफिकेशन है तो वो क्लॉज नंबर अपने कंसोलिडेटेड कारो में लिख दो, और कुछ नहीं करना आपने, सिर्फ इस क्लॉज में तो कंपाइलेशन ही करना है। रिपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स, देखिए ये मतलब अगर किसी ने डिफॉल्ट किया तो कहते हैं प्रॉपर डिस्क्लोजर दो। अगर कंपनी ने किसी भी रीपेमेंट में, चाहे प्रिंसिपल किसी भी लेंडर का अगर डिफॉल्ट किया, तो टेबल बना के बताओ, क्या नेचर ऑफ बोरोइंग इंक्लूडिंग डेट सिक्योरिटी, नेम ऑफ लेंडर, नॉट ड्यू, नॉट पेड, डेट कितना था, प्रिंसिपल था या इंटरेस्ट था, कितने दिन से डिले किया, या अभी भी अनपेड है तो, और फिर रिमार्क्स। कुछ छोड़ा ही नहीं राजेश जी। मतलब अगर आपने डिफॉल्ट किया तो कहते हैं सारी दुनिया को बताओ, सिर्फ ये नहीं कि बैंकर को बताओ, ऑडिटर के थ्रू। अच्छा, मैनेजमेंट को भी डिस्क्लोज करना है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और ऑडिटर को भी डिस्क्लोज करना है, तो दोनों जगह से बताओ। कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं पढ़े तो ऑडिट रिपोर्ट से पता चल जाए, ऑडिट रिपोर्ट नहीं पढ़े तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चल जाए, पता चलना चाहिए। विलफुल डिफॉल्टर, अगर कंपनी को विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर किया है किसी बैंक ने या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने या किसी और लेंडर ने, तो ये कंपनी को शेड्यूल 3 में भी लिखना है और ऑडिटर को अपनी ऑडिट रिपोर्ट में भी लिखना है। देखिए, हमने शेड्यूल 3 में लिखवा के कितना बचाव किया ऑडिटर का, कि पहले कंपनी बताए कि उसने किया क्या, और फिर ऑडिटर बताएगा। कंपनी ने बता दिया तो ऑडिटर बता ही देगा। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि जो कंपनी ने लिखा एज इट इज उस पर विश्वास करके उसी हिसाब से चलिए, नहीं, ऑडिटर को अपने प्रोसीजर लगाने हैं जो कि हमने कारो में दिए भी। एप्लीकेशन ऑफ टर्म लोन्स, तो टर्म लोन्स आपने किस पर्पस के लिए लिए और किस पर्पस के लिए यूज किए, और देखिए वर्ड क्या लिखा, इफ नॉट द अमाउंट ऑफ लोन सो डाइवर्टेड, यूटिलाइज नहीं लिखा, डाइवर्टेड लिखा, कि अगर 100 करोड़ का लोन लिया और 70 करोड़ रुपए किसी और पर्पस के लिए यूज किए, तो ये जो डाइवर्जन है इसको डिस्क्लोज करो, और किस पर्पस के लिए यूज हुए उसको डिस्क्लोज करो। ये मैनेजमेंट को भी रिपोर्ट करना है शेड्यूल 3 में। पर्पस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स,
अगर कोई शॉर्ट टर्म फंड्स लिए और वो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए यूज किए तो वो भी डिस्क्लोज करना है, क्योंकि एसेट लायबिलिटी मिसमैच आ जाएगा। अगर आपने वर्किंग कैपिटल का पैसा फिक्स एसेट में लगा दिया तो उसकी रीपेमेंट कहां से करोगे? तो ये इसलिए एसेट की जो एएलएम मिसमैच है इसके लिए इस क्लॉज को लेकर आए। ऑब्लिगेशन ऑफ कंपोनेंट्स, वेयर द कंपनी हैज टेकन एनी फंड्स फ्रॉम एनी एंटिटी और पर्सन ऑन अकाउंट ऑफ और टू मीट द ऑब्लिगेशन, अगर आपने अपनी सब्सिडरी, एसोसिएट या जॉइंट वेंचर के ऑब्लिगेशन मीट करने के लिए कोई लोन लिया है तो वो ट्रांजैक्शंस, उनका अमाउंट आपको डिस्क्लोज करना है। प्लेज ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ कंपोनेंट्स, इसी तरह से अगर आपने सब्सिडरी, एसोसिएट या जॉइंट वेंचर की सिक्योरिटीज को प्लेज करके अगर लोन लिए हैं तो उनकी डिटेल भी देनी है, और कोई डिफॉल्ट किया है तो वो भी बताना है। रेजिग्नेशन ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर, अगर स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने ड्यूरिंग द ईयर रेजिग्नेशन दिया है, देखिए एक तो होता है 5 साल पूरे हो गए रीअपॉइंटमेंट नहीं, वो रेजिग्नेशन नहीं है, लेकिन अगर बीच में कभी रेजिग्नेशन दिया है तो ऑडिटर को ये बताना है वेदर ही हैज considered the issues, objections or concern raised by the outgoing auditor or not. Corporate social responsibility, CSR में देखिए 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप पैसा स्पेंड कर दीजिए, स्पेंड नहीं किया तो विद इन 6 मंथ ऑफ द एंड ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आप गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दीजिए, और अगर आपका मल्टी ईयर प्रोजेक्ट है तो उसको एक अलग अकाउंट में रखिए, मैक्सिमम 3 ईयर तक का आपका प्रोजेक्ट हो सकता है वो, और फिर वहां से उस पैसे को यूज करिए। अब वो कंप्लाई और एक्सप्लेन नहीं रहा, अब तो आपको यूटिलाइज करना ही है, वरना उसको ट्रांसफर कीजिए। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट में इस क्लॉज में कोई चेंज नहीं है, आपको एफएआर कंपनी बनाए, एफएआर फिक्स एसेट रजिस्टर, और फिजिकली वेरीफाई करे टाइम टू टाइम, और अब जो है इंटेंजिबल एसेट का भी जो है रजिस्टर बनाने की रिक्वायरमेंट है। ये टाइटल डीड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पहले से एक क्लॉज थी कि अगर कोई कंपनी की ऐसी लैंड और बिल्डिंग है जो कंपनी के नाम में नहीं है तो उसको डिस्क्लोज करना है। अब इसका स्कोप थोड़ा और बढ़ा दिया और इसका टेबल दे दिया कि इस टेबुलर फॉर्मेट में आपको डिटेल देनी है। क्या क्या देनी है? कि प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन, लैंड है, बिल्डिंग है, कहां पर है, ग्रॉस कैरिंग वैल्यू बुक्स में कितने पे आ रही है, हेल्ड इन द नेम ऑफ, किसके नाम में है, वो जिसके नाम में है वो प्रमोटर है, डायरेक्टर है, उसका रिश्तेदार है या एम्प्लॉय है, लोग अपने नौकर के नाम में ले लेते थे। पीरियड हेल्ड, कितने टाइम से है और क्यों है, रीजन फॉर नॉट बीइंग हेल्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी, वो सब डिस्क्लोज करना है। तो ये रिक्वायरमेंट है कि अगर आपने ऐसा किया तो वो भी सबको पता चलना चाहिए, विद रीजंस पता चलना चाहिए। ये जो इनामी प्रॉपर्टीज होती है, रिवैल्यूएशन ऑफ पीपी एंड इंटेंजिबल एसेट, अगर आपने फिक्स एसेट या इंटेंजिबल एसेट्स का रिवैल्यूएशन कराया है तो अगर वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर से कराया है तो वो भी लिखो, और अगर 10% से ज्यादा चेंज हुआ है तो वो भी देना है। बेनामी प्रॉपर्टीज, तो पहले मैनेजमेंट को डिस्क्लोजर करना है कि बेनामी एक्ट के अंदर कोई उन पे एक्शन तो नहीं हुआ, फिर ऑडिटर को बताना है कि whether any proceedings have been initiated or are pending against the company for holding any Benami property as defined under the Benami Transaction Prohibition Act and rules made thereunder. If so, whether the company has appropriately disclosed the detail in its financial statements. ये deposits to include deemed deposits, ज्यादा ये NBFCs के लिए applicable है। Statutory dues का clause वही है जो पहले होता था, रीपेमेंट टाइम से हो रही है कि नहीं। आईपीओ एफपीए का क्लॉज भी वही है जो पहले था, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का क्लॉज भी वही है, निधि कंपनी का क्लॉज भी सेम है। एक ही सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर जो है एनबीएफसी के लिए आया है, सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, उसमें लिखा है कि अगर कोई कंपनी एनबीएफसी का बिजनेस कर रही है तो उसने अपना सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लिया है कि नहीं लिया है, और कोई कंपनी अगर सीआईसी की डेफिनेशन में आती है तो उसका क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है या बंद हो गया फुलफिल क्राइटेरिया कर, और अगर कोई ग्रुप एक से ज्यादा सीआईसी का पार्ट है तो वो भी बताना है कि कितनी सीआईसी उस ग्रुप में है, अगर एक ग्रुप में एक से ज्यादा सीआईसी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो। बाकी रिक्वायरमेंट सेम है, वो कोई नई नहीं है। सो ये राजेश भाई एक ब्रीफ ओवरव्यू जो है
नई रिक्वायरमेंट जो कारो की है उसका है। अब मेंबर्स के कोई क्वेश्चन हो, जितने भी क्वेश्चन हो वो हम क्वेश्चंस ले सकते हैं। एक क्वेश्चन आया है सर, एक ही क्वेश्चन है अभी तक तो। चलिए सर। पवन कुमार जी पूछ रहे हैं, सर मैं पढ़ूं या आप सर देख लेंगे सर? आप मैं पढ़ पढ़ूं? लीजिए। हाँ ठीक है। पवन कुमार जी पूछ रहे हैं, सपोज द असेसी कंपनी एंगेज इन ए कस्टम ड्यूटी मैटर केस with custom authorities. The company don't disclose this to auditor and there is no other tool by which auditor can check this online. In this case, what is the responsibility of the auditor? सर ऑनलाइन चेक करने के अलावा हमें लीगल प्रोफेशनल फीस भी देखनी चाहिए। ये देखना चाहिए कंपनी ने किसी लॉयर को या किसी और को एंगेज किया क्या उन केसेस को डिफेंड करने के लिए। कंपनी अगर कोई रजिस्टर बनाती है नोटिस रिसीव करने का तो उसको भी देखना चाहिए। अगर किसी भी तरीके से इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है और मैनेजमेंट नहीं बताती है तो उसके बियॉन्ड ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। उसको मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन भी लेना चाहिए कि कोई ऐसा केस, कोई ऐसा नोटिस नहीं आया हुआ। सर थैंक यू। CS पात्रो साहब पूछ रहे हैं, this new Caro is applicability of for private limited companies. सेम है सर, जो पहले थी वही है, अभी भी है, प्राइवेट कंपनी पे भी है। पहले भी होती थी, जो थ्रेशोल्ड पहले थी वही अभी है, कोई चेंज नहीं हुआ। 2 करोड़ और 20 करोड़ सर, ठीक है ना सर? हाँ। ये 2 करोड़ सर कैपिटल है या रिजर्व एंड सरप्लस मिला करके है? लोगों कंफ्यूज करते हैं सर इसमें। नहीं, कंफ्यूजन तो मुझे नहीं लगता कि राजेश भाई इसमें कोई। 2 करोड़ कैपिटल है ना पेड अप। एक सेकंड रुकिए आप, मैं ये इसमें रिजर्व एंड सरप्लस इंक्लूड नहीं है ना सर? देखिए, अगर कैपिटल है तो रिजर्व एंड सरप्लस नहीं आएगा। और एक चीज उससे पहले मैं बताऊं कि जो ऑडिट ट्रेल था वो 1 साल और डेफर हो गया, और डेफर नहीं होगा तो इसलिए। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है सर, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है सर। हमारी आवाज? हाँ सर यस। मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये जो हमारा ये था, जो ऑडिट ट्रेल का था, ये 1 साल डेफर जरूर हुआ है। लेकिन अब अपने क्लाइंट्स को कहिए कि तैयारी कर लें, उसके बाद डेफरमेंट का मुझे कोई जो है ना वो स्कोप उसमें नहीं लगता है। बहुत लोगों को ये था कि ये ऑडिट ट्रेल कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, लेकिन अल्टीमेटली मैं आपको बताऊं ये ऑडिट ट्रेल आएगा। और मुझे तो लगता है ये इवन नॉन कॉर्पोरेट के ऊपर भी आएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी जो है वो ये रिक्वायरमेंट अपनी लेकर आएगा सर कि कंपनी के बुक्स में कोई चेंज तो नहीं हुआ है, और अगर कोई चेंज हुआ है तो वो अवेलेबल होना चाहिए ट्रैक मोड में। कोई बैकडेटेड एंट्री हुई है, कोई और अगर एंट्री हुई है तो वो ऑडिट ट्रेल के थ्रू आएगा सर। तो इसलिए अभी 1 साल और मिल गया, मैं तो ये कहूँगा कि 1 साल की लाइफ लाइन और मिल गई, ठीक है ना। तो ये जो है ये अपने क्लाइंट्स को, हम सबको एज एन ऑडिटर जो है वो समझाना चाहिए कि अब ये चेंजेस आ रहे हैं और अब इन चेंजेस को जो है ना वो अडॉप्ट करें। अब नॉन कंप्लायंस के लिए स्कोप नहीं रहा है कहीं पर भी, नॉन कंप्लायंस के लिए कोई टॉलरेंस नहीं रही है कहीं पे भी, और कोई स्कोप जो है आगे चल के नहीं है। मतलब उसको मतलब कहीं पे भी इसको हल्के में ना लें सर। और जो आपने एप्लीकेबिलिटी की बात की थी सर, प्राइवेट कंपनीज को इन केस में अप्लाई नहीं होगा अगर वो किसी पब्लिक कंपनी की होल्डिंग या सब्सिडरी ना हो, पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस 1 करोड़ से ज्यादा ना हो। पेड अप कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस बैलेंस शीट डेट पे 1 करोड़ से ज्यादा ना हो, या बोरोइंग 1 करोड़ से ज्यादा ना हो, या उसका जो रेवेन्यू है वो 10 करोड़ से ज्यादा ना हो। ओके ये एग्जाम्पशन। नेक्स्ट इनमें से अगर एक भी क्लॉज सेटिस्फाई हो गई, लोन 2 करोड़ का हो गया, पेड अप कैपिटल 1.5, कोई एक भी क्लॉज सेटिस्फाई हो गई तो कारो लगेगा। सर इसमें एक और चीज लिखी हुई है कि इट विल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन 1% कंपनी एंड स्मॉल कंपनी। वो ठीक है सर, स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन चेंज कर दी इन्होंने। हाँ उसमें 2 करोड़ और 20 करोड़ आ गया, 2 करोड़ कैपिटल और टर्नओवर 20 करोड़ आ गया। सो विच विल बी एप्लीकेबल? स्मॉल कंपनी में 2 करोड़ आ गया एंड इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन स्मॉल कंपनी। यस, आपका पॉइंट सही है सर, क्योंकि ये स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन बाद में चेंज हुई।
हाँ जी, और बात कारो पहले का था। हाँ जी, कारो पहले का था, तो नेचुरली अगर स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन चेंज हुई है तो उस एक्सटेंट तक एप्लीकेबल नहीं होगा। नहीं होगा। सर ठीक आप है। क्लैरिफिकेशन दे दो ना, बिकॉज सर हाइपर ये चला गया 2 साल के लिए, हाइबरनेशन के अंदर बाकी चेंज हो गया। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है, ले अच्छा लेते point। हैं। अवनव चौरसिया जी पूछ रहे हैं, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द कैश लॉसेस। सर कैश लॉसेस जो है, आप अपना कंपनी पीएल देखिए और उसमें नॉन कैश प्रॉफिट देखिए और नॉन कैश एक्सपेंडिचर को ऐड कर दीजिए। अगर लॉस है 4 करोड़ का, डेप्रिसिएशन है 5 करोड़ का, तो कोई कैश लॉस नहीं है। लॉस है 4 करोड़ का और डेप्रिसिएशन और इंटेंजिबल एसेट्स और प्रोविजन मिला के हैं 3 करोड़ के, तो भी कैश लॉस रहेगा। जी सर। हमने दिया भी हुआ है गाइडेंस नोट में कि किस तरह से होना है। जी सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेश कुमार मदान साहब पूछ रहे हैं, सर हाउ टू वेरीफाई स्टॉक व्हेन स्टॉक वैल्यूएशन इज नॉट मेड क्वार्टरली। सर हमने तो कहा ही नहीं कि स्टॉक को वेरीफाई करिए क्वार्टरली, वो तो उसको जो क्लोजिंग स्टॉक है ईयर के एंड पे उससे बैकवर्ड रिकंसिलिएशन तो कर ही सकते हैं ना। जी सर। जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अश्विनी कुमार जी का, वेदर लिमिट ऑफ 1 करोड़ एंड बोरोइंग ऑफ 1 करोड़ इज साइमल्टेनियस, दैट इज बोथ कंडीशन नीड टू बी सेटिस्फाइड। क्या चीज? Whether limit of 1 crore and borrowings of 1 crore is simultaneous, that is both conditions needs to be satisfied. सर दोनों चीजें उस थ्रेशोल्ड से नीचे होनी चाहिए अगर एग्जम्पशन लेनी है तो। इन अश्विनी जी का ये क्वेश्चन है सर, थोड़ा सा लंबा है, मैं पढ़ देता हूँ। ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नॉट बीइंग ए सब्सिडी और होल्डिंग कंपनी ऑफ ए पब्लिक कंपनी having a paid up capital and reserve and surplus not more than 1 crore rupees as on the balance sheet date. सर and अगर किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है या होल्डिंग है तो कारो लगेगा। नहीं है तो नहीं लगेगा। यस, नहीं है तो और बाकी एग्जम्पशन सेटिस्फाई होती है तो नहीं लगेगा। और कोई सर क्वेश्चन नहीं है? देयर इज नो क्वेश्चन पेंडिंग। और कोई क्वेश्चन पेंडिंग नहीं है तो सर अच्छी बात है। मैं अभी जो है मैं तो यही कहना चाहूंगा सर कि चैलेंजेस प्रोफेशन में इंक्रीज हो रहे हैं और एट द सेम टाइम अपॉर्चुनिटीज भी इंक्रीज हो रही हैं। हम ये कह सकते हैं कि जीएसटी ऑडिट चले गए, बिल्कुल चले गए, लेकिन एट द सेम टाइम ईएसजी का स्कोप आया है, शेयर्ड सर्विस सेंटर्स हैं और सोशल ऑडिट आ रहा है। तो प्रोफेशन में अगर हम प्रॉपरली मतलब अपनी स्टडी करते हैं, अपना स्पेशलाइजेशन डेवलप करते हैं तो अपॉर्चुनिटीज काफी हैं। एक क्वेश्चन राजेश जी और आया है शायद। जी सर, क्वेश्चन 2 है, एक बड़ा। हाँ, महेश कुमार मदान जी पूछ रहे हैं, सर प्लीज एक्सप्लेन प्रॉपर रिकॉर्ड्स इन केस ऑफ आरओयू। आरओसी होगा। नहीं आरओयू ठीक कह रहे हैं, वो राइट ऑफ यूज एसेट, राइट ऑफ ओके यूज ओके। एसेट है। तो उसमें जो प्रॉपर रिकॉर्ड है वो यही है कि क्या परचेज कंसिडरेशन थी, क्या उसके वाउचर्स थे, कितनी उसकी यूजफुल लाइफ का एस्टिमेशन है, यही प्रॉपर रिकॉर्ड होगा। अगर आरओयू ये से ही मतलब है मतलब राइट ऑफ यूज से ही मतलब है तो। अमित जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर वो ज्वाइन कर लें, क्योंकि सर का मोर और लेस कंप्लीट भी हो चुका है। सर थैंक यू वेरी मच। थैंक यू राजेश जी। मैं आप सबसे इजाजत लूंगा और फिर दोबारा पर्सनली मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच सर फॉर ए डिटेल्ड thank you. डेलिब्रेशन ऑन द कारो 2020। थैंक यू सर। और वी विल have another session as a physical as suggested by you, sir. बिल्कुल सर, थैंक यू। Thank you, sir. Now time for our learned speaker on revised schedule 3. Amit ji has more than 12 years of extensive experience in assurance and accounting advisory services on internal financial control, GAAP conversion, consolidation, business acquisition, etc. He has significant experience in assisting clients in across diversified sector, including consumer markets, automotive, manufacturing, and retail, etc. He has led many Ind AS and IFRS, GAAP, conversion engagement, and worked as subject matter
expert in resolving complex accounting transactions with respect to financial instrument, consolidation, impairment, revenue recognition, and business combination under Indian GAAP and Ind AS and IFRS. He has extensive experience of project management and is currently leading some of large accounting changes and conversion engagements as a lead project manager. He has led various advisory projects with respect to restatement of financial statement, carve out, carve out financial statement and assist clients in development of finance accounting manuals. He has led the AS conversion project for one of the largest telecom company in India, including its 140 subsidiaries located across the geographies. He is also leading Ind AS conversion projects for one of the power sector company. He has also led IFRS 16 implementation project for one of the largest telecom power company in India. He has excellent communication skill and has been regularly rendering training on various accounting topics such as financial instrument, revenue recognition, leases, business combinations. He has imparted multiple trainings at various forums such as ICI, CAG, ICISA, companies specific training and EY internal trainings. He is also an Ind AS faculty member of ICI. He is a director in EY Financial Accounting and Advisory Services. This is the brief profile of our another speaker on revised Schedule 3. With this, I welcome you and over to you, sir. Thank you, Rajesh ji. Thank you so much. First of all, I would like to say big thank you to you for inviting me and giving me an opportunity to present my views to the CA fraternity here. Right. So we have heard Sanjeev Singhal ji. So the crux of the entire session is basically that the reporting requirements from the auditor perspective has been significantly enhanced. Right. So we should be very vigilant. And we should be thorough enough in respect of what has changed, what reporting requirements which the government expects us, what are the reporting requirements which the society expects us, and we should be thorough on that, and we should be in respect of maintaining our independence as well while reporting under Caro 2020. Right. So Rajesh ji, I will present my screen. Please let me know if it's visible or not. I am hoping, Rajesh ji, you have made me as host. Yes. Yes. Now the screen is appearing. Just give me a moment. Let me know if this is visible or not. Yes, sir. Very well. Let me lower it down. Okay, let me open the pointer as well. So this is visible, guys. So Rajesh ji, first of all, I have kept the theme as a theme. If you look at the theme, there are 4 people who are supporting to each other, right? So the objective which I've kept here is that we all are in the same fraternity, that we should be supporting to each other. That's the theme I have set it here. Okay, I hope this is visible, Rajesh ji. Yes, sir, boss. Okay. So guys, today we are going to have a discussion on Schedule 3, right? Schedule 3. So what is the agenda? Agenda is in respect of Schedule 3, standalone financial statement, Schedule 3 consolidated financial statement, and what has changed in Caro 2020 we have already read, and what has been changed under Schedule 3 with respect to the Caro 2020, right? So that is what we are going to discuss in next 1 hour, right? So I will start with overview of Schedule 3, what has happened, what has changed in last 1 year. So first of all, we have new or revised Schedule 3. Schedule 3 is nothing but the Schedule of Companies Act, right? Which provides the guidance of the presentation and the preparation of the financial statement, right? So before moving to, guys, in respect of Schedule 3, if someone asks me that in respect of preparation of the financial statement, what are the different guidance available today to prepare the financial statement, right? So that is a very, very broad statement. Very, very important question here is, because we should be, as a chartered accountant, we should be very clear what are the different guidance we should refer in order to prepare the financial statement, guys. So as you must be aware of the fact that revised Schedule 3 or Schedule 3 is divided into 3 categories. Category 1, which is Division 1, it is Indian GAAP. Division 2, Ind AS for the companies. Division 3, Ind AS for the NBFCs.
right? So entire Schedule 3 is divided into three divisions: Division 1, Division 2, Division 3. Right? If you remember, guys, couple of years ago, we said Ind AS is also applicable for banks and insurance companies, but those has been deferred, right? So as of now, since Ind AS is not applicable to banks and insurance companies, so there is no consequential amendment has been made in Schedule 3. So as of now, Ind AS is only applicable for the companies and NBFCs companies. Thereby, we are having Division 2 and Division 3 Ind AS for the companies and NBFCs. So if a company is preparing its financial statement under Indian GAAP, company has to refer Division 1 of Schedule 3. If the company is preparing its financial statement under Ind AS, then company has to refer Division 2. And if the company is preparing its financial statement, which is an NBFC, then it is a case of Division 3. So first of all, we should be very clear if we are preparing the financial statement for a company who is applying Indian GAAP, which division we need to follow, what all disclosures we need to give as per the requirement of Schedule 3 of Indian GAAP. Correct? So 24th March 2021, MCA issued a notification which is a revised Schedule 3 amendment, and they have said that these are the 10 amendments, 15 amendments, and these are the amendments which are applicable for the companies in respect of the preparation and the presentation of the financial statements, right? These amendments are applicable from 1st April 2021, right? These amendments are applicable from 1st April 2021. If we look at the MCA circular, it only says it is applicable from 1st April 2021. It will not say, it is silent on the particular aspect that it is applicable for the accounting period beginning on and after 1st April 21, right? It is silent on that. But subsequently, what has happened, ICAI has issued a guidance note on this particular aspect, and ICAI has clarified that if any period, that this revised Schedule 3 is applicable for only for those period which is beginning on and after 1st April 2021. That means if a company is following a December year end, 31st December 21, then this revised Schedule 3 is not applicable for that annual period ending 31st December 2021. So that means when we will be presenting my accounts for the year ended 31st March 2022, which is a period beginning on and after 1st April 2021, only then the changes which have been introduced by revised Schedule 3, it is applicable to that company. The critical aspect, my dear friend, here is that this is not only going to impact my current year numbers. This is not only going to impact my current year disclosures. This is also impacting my previous year or the comparative numbers. This is also impacting my previous year and the comparative disclosures, right? When we will be presenting my 31st March 2022 accounts, I am supposed to give 31st March 21 numbers as a comparative. It is a mandate requirement of Schedule 3, right? So in that case, these updates, these amendments issued by the MCA in respect of Schedule 3 is not only applicable for the current year, will also get applicable for the previous year as well, right? That means as a chartered accountant, as an auditor, as an employee of a company, we should be mindful that whenever we are preparing my 31st March 22 accounts of the company for the comparative years, all these disclosures are applicable. Correct, guys? Secondly, you guys must have seen in the last couple of years, many companies are going for a IPO, right? In the IPO, SEBI has a reporting requirement that if the company is planning to file a DRHP, in the DRHP, they are supposed to give 3 years previous year numbers. And those number needs to be restated numbers as per the Ind AS. So any company who is going for an IPO, first of all, that company has to adopt Ind AS. It is not a case that the company is going for an IPO, they can continue with the Indian GAAP. It's a requirement of Ind AS itself. If the company is planning for an IPO, then the company has to transit from Indian GAAP to Ind AS. So the point here, which I'm talking about, that if the company is planning to go for an IPO, then what will happen? The company is supposed to give previous 3-year restated numbers to the SEBI, right?
Now the question arises here is whether the Schedule 3 changes, whether the Schedule 3 disclosures which have been introduced by MCA in the year 2021 and 2, whether those disclosures are applicable to those scenario to the previous year 3 years numbers or not, where a company is going for an IPO, right? So answer to that question is that these disclosures are not only applicable for the current year, these disclosures will also get applicable for the previous 3 years in case of a company who is going for an IPO, right? So it is not a 1 year impact, guys. For a private companies, this is a 2 years impact, current year and the previous year. For a company who is going for an IPO, this is not an impact of 1 year. This is impacting past year numbers and the disclosures as well, right? So we should be very mindful. We should be very vigilant. What's happening on the ground, what's happening at my client side. Correct. So when I will be preparing my financial accounts, financial statements, so first of all, I need to refer Schedule 3 or revised Schedule 3. Plus, I am supposed to refer in ICI guidance note on Schedule 3 as well. Last year, ICI issued a guidance note, draft guidance note in the month of August, and a couple of months has been given for receiving the comments from the CF fraternity. And on 20th January 2022, ICI has released its final guidance note on Schedule 3. This guidance note is applicable both for the Indian GAAP as well as Ind AS. So when I'm preparing my financial statement under Indian GAAP, what are the two things I need to refer? I need to refer Schedule 3, updated Schedule 3, revised Schedule 3, plus the guidance note issued by ICI. But if I'm preparing my financial statement under Ind AS, what I need to refer? I need to refer Schedule 3. I need to refer guidance note issued by Schedule 3. Plus, I am also supposed to refer Ind AS 1, which talks about the preparation and presentation of the financial statement under Ind AS. Right? Under Indian GAAP scenario, there is no standard which talks about the minimum criteria which needs to be presented in balance sheet P&L. Right? This is already covered in Schedule 3, but Ind AS 1 provides certain additional guidance which were not there under Schedule 3, right? This guidance note is also applicable from 1st April 2021. Then we had a Caro 2020 reporting, which we had in which we have learned lots of things from Sanjeev Singhal sir, right? This is also applicable for the Ind AS companies and for the companies who are following Indian GAAP. This is applicable from 1st April 21. Initially, it was made applicable for the year 2020, 31st March 2020. That's why the name has been given 2020. But it has been deferred by 1 year. Then it was made mandatory for 31st March 21. Then during the COVID period, it has been deferred by 1 more year. And finally, it is going to be implemented for the year ended 31st March 22. Right? Another reason of deferment is the MCA wants to align the Caro 2020 with the revised Schedule 3, right? As Sanjeev sir said, that first we have made the management responsible for all those facts and disclosures, and then the responsibility has been shifted to auditor to comment on that whether these facts exist or not, right? That is one of the reasons why the Caro 2020 has been deferred to 22. Right, so this is the gist, guys. This is the overview that in order to prepare the financial statement under Indian GAAP, we need to refer Schedule 3, we need to refer ICI guidance 2. In order to prepare the Ind AS financial statement, we need to refer 3 things: revised Schedule 3, ICI guidance note, plus Ind AS 1, which deals with the presentation and preparation of financial statement. I hope from the applicability perspective, there should not be any doubt in the minds of any of my friends here. Correct? Okay, let me move on. IPO we have talked about, previous year we have talked about, December year end we have talked about, consol financial statement, right? So Schedule 3 when came up, the revised Schedule 3 which has came up, it does not provide any guidance in respect of consol financial statement, right? It does not say that this particular clause is applicable in the consol books, this particular clause is not applicable in consol books, right? But ICI has come up with the view that these are the particular scenario in which these disclosures are applicable or not.
In the guidance note issued by ICAI, they have divided all those disclosure into three parts from the perspective of consolidated financial statement. What are those three parts? The part number one, the disclosures needs to be given in the standalone, needs to be carried forward in the console. Second is the disclosure which has been given in the standalone is not required to be carried forward in the console books, because it merely represents a repetition of the disclosures. It will not provide any value addition to the users of the financial statement. And the third scenario is, if those disclosures are material to the company, then the company should disclose it in the console books. So these are the three type of reporting, three type of reporting which the ICAI has provided in respect of the disclosure of these Schedule 3 amendments in console books, guys. Correct. Then we have interim and the condensed financial statement. Right. So how many types of financial statement we are having? We are having the standalone financial statement, we are having console financial statement, and we are having interim financial statement. Right. We have a separate standard under Indian GAAP as well as under Ind AS in respect of preparation of the interim financial statement. If any company is preparing the interim financial statement as per the respective standard, these disclosure requirements of amended revised Schedule 3 are also applicable to that interim financial statement as well. Right. So generally listed companies prepare their interim financial statement. So these requirements will also get applicable to those companies. Correct. Okay. Let me move on, guys. Now, so many disclosures have been incorporated. Let me go through what are the key disclosures which has been incorporated under Schedule 3. And remember, guys, this is not only applicable for Ind AS, this is applicable for both Indian GAAP as well as under Ind AS. Correct. First is capital work in progress. As of now, under Indian GAAP or under Ind AS, how I am disclosing my capital work in progress, how a company is disclosing its capital work in progress. They are just giving one number in the financial statement, right? So company disclosed capital work in progress 100 crore rupees as of March 21 with a comparative of 80 crore rupees, right? There is no aging disclosure requirement was there. Now what the MCA said, now two additional disclosure needs to be given. One is CWIP aging needs to be given, and the second one is aging needs to be given for those projects whose completion is overdue or the cost has been exceeded as a planned cost. Right. If I look at disclosure number one within the CWIP, first is CWIP aging. Now I am supposed to give the aging of CWIP in these category. What is the category? Project in progress and project temporarily suspended. Now the question is, what is a project? How can I say this is a project? MCA Schedule 3 is silent on that. Then ICAI has come up on that, and ICAI said project may be construed as smallest group of assets having a common intended use. That means smallest group of assets having the intended use. That means any project where the group of assets has been constructed, where the group of assets has been constructed or purchased, then that becomes a project. It is very subjective. It will require certain judgment. It will require certain judgment from the management side whether this particular whether this acquisition, whether this production, whether this manufacturing results into a project or not. Right. So basis that a project needs to be identified. Right. So if the project has been identified, then we need to assess whether the project is in progress or the project has been temporarily suspended. What is in progress and when this needs to be checked? So this needs to be checked as on the reporting date. It is not supposed to be checked only as at year end. It is supposed to be checked as at reporting date. For example, from the listed company's perspective, 30th June is the reporting date. 30th September is the reporting date. 31st December is the reporting date. 31st March is the reporting date. So for the listed companies, these assessment needs to be done on these respective dates. But if I am talking about in respect of private companies, these assessment needs to be done only as at year end 31st March, whether the project is progress or whether the project has been temporarily suspended.
It may possible, my dear friend, that during the year the project is in progress, but as a year end the project has been suspended due to XYZ reason, or vice versa, that the project has been temporarily suspended, but in the month of March the project has been in the progress stage. So the assessment needs to be done only as at 31st March for the private companies and for the listed companies as on the reporting date. So once the project has been identified, once it has been identified that the project is in progress or temporarily suspended, then what is the next step? The next step is to identify the numbers into this age bracket. What is the age bracket? CWIP or any project which is less than 1 year, I will give the separate number. For CWIP which falls under 1 to 2 years, I will capture here. For the CWIP 2 to 3 years, I will capture here, and more than 3 years, I will capture in this particular column. The objective of revised schedule 3 is the objective of MCA to bring the revised schedule 3 is to improve the financial reporting, right? Is to bring the transparency, right? Is to bring or improve the reliability of the users of the financial statement on the company's financial statements, right? So they are asking now that the CWIP, for which we never used to disclose how old the CWIP was, now we are supposed to give a disclosure in less than 1 year, 1 to 2 years, 2 to 3 years, and more than 3 years. That means in case of the big companies, it may also possible they need to check whether this disclosure is possible through their ERP or not, right? So they may evaluate whether going forward basis, first of all, this is required on a going forward basis. They may evaluate whether the updation is required in their ERP software or not, or whether these details are easily available in their system, right? If the company is following Tally, I believe it's available it's easily available, but the only point is it is to be given for the current year and it is to be given for the previous year as well. Right, guys? So this is the disclosure number 1 within the CWIP, which is the aging schedule. Now we have second disclosure. What is second disclosure? Aging details of the projects where completion is overdue or the cost has been exceeded as planned. That means aging needs to be given where the completion has been overdue, where I was expecting that it must be completed in 2 years, but actually it has taken more than 2 years. So I need to give a disclosure that when it will be completed, whether the project one will be completed in less than 1 year, 1 to 2 years, 2 to 3 years, or more than 3 years. So first of all, first we need to give information that how old CWIP was lying as at year end. And second, I need to give information how much time it will take to get it ready for the intended use in the future. That means past information needs to be given and the future information needs to be given when it is expected to be completed. And this information needs to be given only for those projects whose completion has been overdue or whose cost has been exceeded as compared to the original cost. Now the question arises, what is my original plan, right? Again, MC is silent on that particular aspect. Then ICE has come up on the view and they have provided what is the meaning of original, right? They have provided the guidance, what is the meaning of original plan. So what they've said, company's original plan shall be considered as that plan which is approved by the relevant authority and on the basis of which implementation progress is evaluated. That means when you have started the project, when it has been approved by the relevant authority in the organization, maybe board, maybe a supervisory board, maybe a committee, then that plan which has been finalized by that committee is called original plan, right? And if there are changes is happening in terms of timing, in terms of cost, then that needs to be disclosed in this particular manner in this table format itself, right? So this is a big change which has come up in respect of capital work in progress. So my dear friend, whenever you are doing the audit of any company or preparing the financial statement of any company, please be mindful that all these disclosures needs to be given in the financial statement, whether it is Indian GAAP or it is Ind AS. Correct? Okay, let me move forward. Second,
So one is, this is in respect of the capital work in progress. The similar changes has been incorporated under intangible under development, right? Even under the previous schedule 3, we were only showing the closing number of intangible under development. We were not providing any details because it was not required, right? So whatever the details which we have read in CWIP, now those similar information needs to be given in case of intangible under development. For example, what can be the case of intangible under development? Software. If one company has hired, let's say, SAP company for the installation of SAP software, right? And that project is going on for last 3 years. Earlier, it was expected to be completed within 2 years, right? Then that becomes an intangible under development, and whose disclosure needs to be given in the financial statements. So one is the aging schedule. Second one is the details of the project which has become overdue or where the cost has been exceeded. So similar to CWIP, these disclosure needs to be given in case of intangible under development, guys. Let me move on. Then we have revaluation of PPE, intangible and immovable property, right? A revaluation of PPE. If you have read, guys, Ind AS 16, if you have read AS 10, right, there is a concept of cost model or the revaluation model, right? So in the revaluation model, in the cost model, company can carry its property, plant and equipment at cost, right? And it is applicable on a class by class basis. Under Ind AS 16, company can carry its PPE at cost on a class by class basis, but there is also a revaluation model available where the company can revalue its property, plant and equipment, and that is applicable for the class by class. What is class by class? If you look at the PP schedule of any company in the financial statement, couple of items are generally appearing. For example, land, building, plant and machinery, computers, fixtures, office equipments, vehicles, right? These are called class. These are called class. Land is a class. Within the land, there may be a multiple lands. So if a company wants to revalue land, entire land, let's say company is having 10 lands within the category of land, all the lands, all the 10 lands needs to be fair valued. That is the meaning of class, right? Within the class, the company can divide the class to a further class. For example, in case of building, company can say factory building is one class, right? Admin building is one class. So in this way, the building or other assets can be divided into the classes. But the point which I'm highlighting here is, if the company has adopted revaluation model, that the company is going for a fair valuation model and the value is increasing or decreasing by 10%, right? If the value is changing by 10% or more in each class of PPE intangible, then the disclosure needs to be given in the financial statement, right? That means PP value revalue is changing by 10% up or 10% down, then the disclosure is required from the management perspective. Financial statement is the output of the management. So first of all, responsibility is on the management. And secondly, if auditor is also required to comment that whether the revaluation model or revaluation has been carried out by the registered valuer or not. Where is registered valuer defined? Section 247 of Companies Act. So first of all, the company is supposed to disclose in its financial statement whether the PPE is changing by 10% or more and whether the revaluation has been carried out by the registered valuer or not. And then finally, the responsibility will be shifted to auditors, where the auditor is supposed to comment on that, whether the value is changing by 10% or more and whether the valuation has been carried out by registered valuer. That means a consequential amendment has been made in Caro 2020. Correct. So we should be very mindful, guys. What is written in the accounting policy of the company, whether they are following cost model or whether they are following revaluation model. And the same thing we have read in the last session with Sanjeev Singhal sir. He has also focused on this aspect that the auditor is required to comment on that. Now the next is title deeds of the immovable property, right? Earlier, if let's say I am holding a land and I'm not holding the title deeds, the land is not in my name, but I'm the beneficial owner of that land.
there is no specific requirement under Ind AS, under Indian GAAP, under Companies Act that we need to give a disclosure for that, right? Now the disclosure has come up. What we are supposed to do in this particular format, we need to give a disclosures in the financial statement. What are these items? Relevant item in the balance sheet, whether it is included in the PP or whether it is included in investment property. Description of the property, land, building, plant and machinery, etc. What is the gross carrying value? Title deed held in the name of which company or which person? Whether the title deed holder is a promoter, director or relative of promoter or director or employee or promoter or director. That means if the title deed is held in the name of any related party like promoter, relative, director, promoter of the relative of the promoter, relative of the director, right? So that disclosure is supposed to be given here itself. Property held since which date? I need to disclose that thing. Reason for not being held in the name of the company. Now the company is also required to give the reason why it has not been transferred in the name of the company when the company is using it, right? So this is the additional guidance which has come up on title deed of the immovable property. Then very, very important guys, trade receivable aging schedule. Earlier, how we were giving the financial, how we were giving the disclosure of trade receivable, we were giving like this: considered good, secured, considered good, unsecured, significant increase in the credit risk, trade receivable, credit impaired. But the aging bracket has not been defined. Now what has happened? This is the way we are supposed to give debtors format, debtor disclosures in the financial statement. First of all, trade receivable considered good, undisputed trade receivable which have a significant increase in the credit risk, undisputed trade receivable, credit impaired. That means this trade receivable has become bad, right? Which have a significant increase in the credit risk means we are creating a provision for doubtful debt of those debtor because the risk is increasing. Then we are talking about disputed trade receivable which is considered good. That means first of all the trade receivable has been divided into two categories. One is disputed, second one is undisputed, right? And if you look at the point number 4 here, disputed trade receivable considered good. When this came up, I have read it very barely that disputed trade receivable is disputed, but still we are saying it is good. How is it possible? Then I realized that it may also possible that the trade receivable, there is a suit going on in the court of law from the debtor side, from the company side, but the company's lawyer is saying that we will win the case. There is a high probability, 100% probability to win the case. Then it will be a disputed trade receivable, but it is still good. It is possible. Then disputed trade receivable, which increase in the significant credit risk. Then finally disputed trade receivable, credit impaired. Now the aging needs to be given. What is aging parameters? Unbilled, not due, less than 6 months, 6 to 1 year, 6 months to 1 year, 1 to 2 years, 2 to 3 years, more than 3 years. And this will be given from the, not from the invoice date, not from the transaction date. Then it will be given from the credit period date, right? Some companies generally ask, some people generally ask, sir, I don't have any credit period agreed with my customers. Then transaction date become the credit period. That means the moment you have sold the goods, the moment you have raised the invoice, at that point in time, the other party is liable to make the payment. Invoice needs to be paid on presentation, right? So in that case, my credit period will be 0. But in this particular scenario, the aging needs to be computed based on the credit period and not from the invoice date, right? And most importantly, guys, unbilled debtor needs to be included here, right? Generally people show it as, so there are two concepts, guys, within NDS. There are two concepts on unbilled, right? So there is a scenario where the unbilled needs to be considered as a part of trade receivable, and the second scenario would be unbilled will be considered as a part of the contract asset. What is the difference between these two? The difference between these two is very simple. Where my service has been overed, where my deliverables has been overed, where my performance obligation has been overed, but
I have not been able to raise the invoice by 31st March, but the services has been completed. In that case, this receivable will be clubbed as unbilled and will be shown as a part of the trade receivable. Correct? But second scenario, where the services has not been completed, services will get completed on 15th of April, right? Only then I will be able to raise the invoice. Then for 15 months, 15 days revenue, I will recognize the revenue with a consequential impact on receivable, right? And that receivable will form a part of contract assets. So we should be mindful, guys, when it will be clubbed as a part of the trade receivable and when the unbilled revenue will be clubbed as a part of contract assets. But this disclosure has come up with this age bracket. Now the management need to think what changes needs to be made in the ERP so that they will get this aging from the system itself going forward. Big change, significant change in trade receivable. Similarly, a big change in trade payable as well. Earlier in the past, in the history of the financial reporting in India, we have never given any aging of trade payable. But what has happened in this schedule 3, we need to give the aging of the trade payable, right? What is the aging schedule? Less than 1 year, 1 to 2 years, 2 to 3 years, and more than 3 years. Right? Less than 1 year, 1 to 2 years, 3 years, more than 3 years, not due separately and unbilled separately. MSMED needs to be disclosed separately, other creditor needs to be disclosed separately, and disputed MSMED and disputed other creditors needs to be disclosed separately. Right? So trade payable is a significant another change in the financial reporting aspect. Let me move on. Another very important matter which has come up, ratios. This we used to read in financial management in CA final way back, right? But we never used to disclose these ratios as a part of the financial statement. Now the new changes is saying, MC is asking, government is asking, boss, start giving these 11 ratios in your financial statement itself, right? And if there is a change in the ratio as compared to the previous year is 25% or more as compared to previous year, then the reason of the same is supposed to be disclosed. Now the question arises, sir, how do I give these disclosures? What is the formula which should I use? Should I go back to refer my CA final books? Then we have looked at revised schedule 3 again, whether MC has prescribed any formula for these, because otherwise there will be a big diversity in using the formula in the market in the various industry. But we have realized MCA schedule 3 was silent on these ratios formula. Then ICA has come up on that, and ICA has provided formula for all these ratios. They have provided detailed guidance what all needs to be considered in respect of these financial ratios. If I read these ratios, current assets divided by liabilities, debt equity ratio, total debt divided by equity shareholder funds, debt service coverage ratio, earnings available for debt service divided by net debt, and they have also defined how this needs to be computed. Correct? Inventory turnover ratios, cost of goods sold divided by average inventory. Trade receivable turnover ratio, net credit sale divided by average accounts receivable. Trade payable turnover ratios, credit purchase divided by average trade payable. Net capital turnover ratios, net sales divided by working capital. Net profit ratios, return on capital employed, earning before interest and taxes divided by capital employed. Return on investment, they have given some complex formula to compute the return on investment. And how it is to be disclosed? This is disclosed like this. We need to give the numerator, we need to give the denominator, which must be matching with my financial statement. These numbers must come up from the financial statement. What is the current period? What is the previous period? What is the variance? And what is the reason for this variance? Correct? And the consequential changes has also been incorporated in the Caro 2020, that based on the reading of these ratios, auditor is required to comment whether the company will face any financial difficulty in repaying its debt or not. That means judgment is required. Onus is also on the companies, not only from the management.
right guys? These are the couple of big changes which has significantly impacting the financial reporting in Indian scenario. Let me move on guys. Then small and very quick disclosures. Earlier security deposit, we will show it as a part of the financial asset loans. Now it has been transferred to other financial assets. Earlier, current maturities of long-term debt, we show it as a part of other financial liability. Now we need to show it as a part of short-term borrowing. Lease liability, we were showing as a part of borrowings or financial liability. It was not clear. People are using different disclosures. Now that has been aligned. Now it needs to be disclosed under financial liability itself. Couple of more disclosures. If any loan has been given, if any advance has been given, which is in the nature of loan to directors or the KMP, which are repayable on demand or whose repayable terms has not been defined, we need to give a disclosure. What is the loan outstanding which has been given to promoter, directors, KMP, related parties, and what is the percentage to the total amount? That means focus in on related party. In the Sanjeev Singhal sessions as well, he has focused on related party transaction. Disclosures is required for a related party transaction, both under AS 18, both under Ind AS 24, and as well as Schedule 3. Right? Utilization of the funds. 3 different disclosures has been incorporated. One, where the borrowing has been obtained on the basis of security of current assets. Right? Sanjeev sir has also talked about this. Disclosure in respect of utilization of the funds and disclosure in respect of utilization of borrowings. Let me go through one by one. Disclosure in respect of borrowings taken on the security or current assets. So it is simply that whether the quarterly returns or the statement of current assets filed by the company are in agreement with the books of accounts or not. Right? So that means we need to ensure that the quarterly returns filed by the company to the banks, whether they are matching with the books of accounts of the company or not. Earlier, what was the malpractices used to happen? People used to submit this statement to the banks on 27th of June, 28th of September, but not as of reporting period end, so that nobody can reconcile its books of accounts. Now, guys, first of all, management responsibility is that they need to disclose in its financial statement that quarterly returns which they have submitted to the bank is matching with their books of accounts, is matching their financial records, and auditor is supposed to comment on that on the annual report. Right? And consequential changes has already been made in the Caro 2020, where the sanctioned working capital limits in excess of 5 crores or more, only then the auditor is required to comment on that. That means the reporting requirement from the management is wide as compared to the auditor's requirement, because below 5 crore rupees, auditor is not supposed to comment, but the management is still required to comment in the books of accounts. Very welcome step taken by MC on this aspect. Next point is utilization of the fund advance or borrowed. So guys, what has been changed, right? I'm just reading out what is the text, what is the bare text given by MCA. Where the company has given any advance or loan or invest in a fund to any person, entities, or any intermediaries with an understanding to lend and invest in the ultimate beneficiary. Simple meaning is, if the company has given a loan to another company and that company has passed on that loan to another company, right? That means the company is operating as a agent, as a mediator. So I have taken a loan from someone and I have passed on that loan to a third party. I am operating as a agent. I am operating as a mediator. Then what is required in my financial statement? Date and amount of the fund advance. Date and the amount of the fund further advanced by such intermediary to the ultimate beneficiary when the amount has been actually be transferred to ultimate beneficiary. What is the amount of guarantee? What is the amount of security? Is there any declaration from the FEMA? Is there any compliance or non-compliance from the FEMA and Companies Act? That is also supposed to be disclosed. So it is a case where I have given a loan to someone and that loan has been given to further
subsidiaries or further third parties, right? Now, if you do the reverse of this transaction, where I have taken a loan from a third party and I have passed on to any third party, to a ultimate beneficiary, all these disclosures are supposed to give in my books of accounts, right? The objective is to disclose the chain transaction where multiple companies are getting involved and people are misusing and doing the malpractices by doing the chain transaction, right? Okay. Another thing is utilization, where the short-term funds has been taken and but utilized for some other purpose. So where the company has taken a loan for one particular purpose from the bank or financial institution, and that loan has been used for any other purpose other than that for which it has been taken. Now it is the responsibility of the company to disclose in its financial statement. How the disclosure needs to be given: nature of the funds raised, name of the lender, amount diverted, purpose for which the amount was sanctioned, purpose for which the amount was utilized, and the final remarks. Correct? The responsibility is on the company as well, and consequential amendment has already been made in the Caro 2020. Correct, guys? Let me move on. Small change in the equity in India scenario where there is an error identified in current year pertaining to the previous year. In respect of equity, a separate column has been incorporated, change in equity share capital due to the previous year. This is a small change which has been incorporated. CSR, as Sanjeev sir said, now it's a case of expenditure. Now additional information needs to be disclosed in the financial statements. Amount of expenditure incurred, shortfall at the end of the year, total previous year shortfall, reason for the shortfall. Nature of CSR activities to be disclosed. Details of related party transaction where any CSR trust or where any CSR activities have been carried out through related party, all the disclosure needs to be given. Disclosures of the roll forward of the provision. That means opening से closing तक की movement का disclosure देना है. Opening balance of provision, addition made during the year, minus any utilization during the year, and the closing balance of the CSR. So all those disclosures needs to be given in the financial statement, guys. Then promoter shareholding. Earlier promoter shareholding was not supposed to be given. The earlier schedule 3 requires that any company or any shareholder holding 5% or more, then the disclosure is to be required. Now here schedule 3 is saying that we need to give promoter shareholding. Promoter name needs to be mentioned here, number of shares, percentage, and the previous year as well with a change in percentage. Now the question arises, who is a promoter? Then the Companies Act provides a definition. The promoter means a person who has been named as in prospectus or is identified by the company in the annual return. So it may be possible that as an auditor, we need to check the annual return of the company. It may be possible that what is written in the prospectus of the company at the time of filing DRHP. But if the company is not in the process of listing, then we need to check annual return, right? Another definition is promoter means a person who has a control over the affairs of the company, directly or indirectly, whether he is a shareholder, whether he is a director or otherwise, in accordance with whose advice, direction, instruction of board of directors of the company is accustomed to act. That means who is the promoter, who is controlling the company, who is managing the affairs of the company either directly or indirectly, and on whose advice board of director is accustomed to act. That person is called a promoter of the company. Correct, guys? So these are the critical changes which has been incorporated into Companies Act. Schedule 3, right? Couple of other disclosures. Benami property. If any Benami property has been identified in any proceeding, then it needs to be disclosed here, as well as consequential amendment been made in Caro 2020. Cryptocurrency or virtual currency. If company is dealing with any cryptocurrency transaction, then that needs to be disclosed. Relationship with the stock of companies. This is a big item during the current environment, guys. So if the company is dealing, how to check whether the company has done a transaction with the stock of companies. So in this aspect, guys, I will tell you what's happening on the practical ground. So
So what needs to be done, basically all the vendors and the customers data needs to be collated from the company's perspective, management perspective, and that needs to be corroborated from the list issued by the Ministry of Corporate Affairs. Now the challenge which the people are facing is that when we go at the MCA side and see the list of the stock of companies, it is not available in Excel file. It is not available in Word file. It is in the PDF format. And it's a huge list. It's a huge list. They have uploaded the scanned copy of those stock of companies. In every sheet, they are having 15 to 20 names of the companies. Now a person has to download all those sheets, copy paste from PPT from the PDF file to the Excel file, and the format is not getting copy paste as it is. That is what the practical challenge we are having here. But the point is, if the company has entered into any transaction with the stock of companies, that needs to be disclosed. Undisclosed income, if any undisclosed income has been identified in any tax proceeding, that needs to be disclosed. If the company is entering into any merger, amalgamation, acquisition, right, where the approval from the NCLT or the High Court is taken, then that needs to be disclosed. If any registration of charges is pending beyond the statutory period, then it again needs to be disclosed. So this is in respect of, guys, what disclosure needs to be given in the preparation of the standalone financial statement. If I need to talk about consolidated financial statement, it is divided into three categories. Again, no guidance available in Schedule 3. It is provided by ICI guidance note. Certain disclosures required at CFS level. Certain disclosures are required if it is material in nature, and certain disclosures are not required at the CFS level. So let me move on this particular aspect. So these are the disclosure required at CFS level. Disclosure of shareholders, shareholding of promoters, trade payable aging, trade receivable aging, revaluation of PPE, loans and advances additional disclosure, Benami property, willful defaulter, stock of companies transaction, and undisclosed income. So if all these disclosures need to be replicated or reproduced in the consolidated financial statements as well. If I move on, that these are the disclosures which needs to be given if it is material, right? What are those disclosure? CWIP aging, intangible under development aging, current assets, loan taken against the current assets, amalgamation arrangements, borrowed funds, utilization of borrowed funds, transaction in cryptocurrency or virtual currency, and how it is to be treated as material. If the value is 10% or more in the respective item, then it needs to be disclosed in the consol books. And these are the items which are not supposed to repeated in the consol books: title deed, registration of charges, payment to auditors, disclosures required as per MSMED Act, CSR, and analytical ratios. All these disclosures are not relevant for the consol. Company may skip, but if any company wants to disclose it, they may disclose it, but unnecessarily they will make it heavy. The consol financial will become heavy because it results into a reproduction of those information which the company must have disclosed in the standalone. Now guys, I will move to my last section, Caro 2020 versus Schedule 3. That means whatever the changes has been made in Schedule 3 has been consequently amended in Caro 2020 or vice versa. First is disclosure of title deed. It is there under 2020 Caro, and it is also been incorporated into Schedule 3. Revaluation of PP and intangibles exist under Caro, also existing under Schedule 3. Benami transaction, Caro 2020 amended, Schedule 3 has been amended. Working capital loan has been adjusted, has been taken against the current assets. So under Caro, auditor is only supposed to comment for the loan which has been taken more than 5 crores, but there is no limit from the management perspective. That means Schedule 3 is much wider from the management perspective as compared to Caro 2020. Loans and advances in the nature of loan, either repayable on demand or without specifying their terms. It is mandatory in Caro 2020 as well as in Schedule 3. Disclosure is additionally required under Caro where the loans and advances are given to related parties. That means for Schedule 3, it is only required for any other company other than related party. But here,
Caro 2020 includes all type of advances which has been given. So the Caro 2020 is much wider as compared to Schedule 3. Unrecorded income under both scenario. Company is declared to be willful defaulter, both scenario, where the term loan has been applied for the purpose of other than the purpose for which the loan has been obtained under both scenario. Caro 2020 only covers the term loan, whereas Schedule 3 includes all types of borrowing. So that means the Caro 2020 is Schedule 3 is much wider than Caro. Disclosure of financial issues needs to be given. Auditor is required to comment whether based on the review of financial statement, whether the company is able to meet its financial obligation or not. That is the responsibility of the auditor by reviewing the financial ratios. And CSR, both requirements, both disclosures required under Caro 2020 and Schedule 3. So these are the critical amendments, guys, which we have discussed here, right? And I believe you have gained lots of insights in respect of all these amendments in the Caro 2020 through Sanjeev sir, as well as in this session as well. Let me know if there is any doubt. Thank you, Amit ji. Only two questions on my screen. First question is from Mahesh Kumar Madanji. Sir, if company follows cost model, can I shift to revaluation model in respect of land and building? Yes, sir. But it needs to be applied on a class by class basis, right? And once it has been, and first of all, there is a reason why the company is shifting. Second is this needs to be applied on a class by class basis. What is class? Land and building. Suppose within the land and building, there are multiple land and building. It needs to be applied for all. It is not a cherry picking case. It needs to be applied for all. Third scenario, third point would be if the company is going for a revaluation model, it needs to be revalued on each reporting date. That means company need to incur a cost for hiring a registered valuer, right? And fourth is additional disclosure requirement will get applicable from the perspective Schedule 3 and Caro 2020 from the auditor side. So these are the 5 things which the company should be mindful before adopting revaluation. And and one more point on this aspect. If the company is going for a revaluation, what will happen? In respect of the building, let's say value will increase. Company will have more depreciation in the P&L. Okay, sir. Correct? Now there are 4 members who raised their hand. One is Sunil Agrawal, second was Renu Sharma ji, CA Atmaram Sharma ji, and KS Baba ji. I request, I allowed them. KS Baba ji, ask your question, please. KS Baba ji, Sunil ji, Madam Renu ji, Atmaram Sharma ji, ask your question, please. Unmute करके अपना question पूछें. जी मैडम. मैडम अनम्यूट कीजिएगा आप अपने. सरिया साहब, सुनील जी. चलो भाई, कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें. एक आनंद जैन जी ने का क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, इसलिए मैं ले नहीं रहा हूं. उनसे रिक्वेस्ट है वो आप अनम्यूट करके मेरे से सर से पूछ लें सवाल. लोकेश गुप्ता जी पूछ रहे हैं, इज रिवाइज्ड शेड्यूल 3 is applicable for small companies? Sir, it is applicable for all the companies who is preparing its financial statement under section 129 of the Companies Act. महेश कुमार मदान साहब पूछ रहे हैं, सर, if there is an outstanding public payable from or to from earlier years, even though there is no transaction during the year with struck of companies, whether the required disclosure? Sir, please come again. If the transaction outstanding for the last year, previous years, but Yes. not for the current year. Yes. Okay. So, sir, first of all, the requirement is any transaction made during the year for the with the stock of companies that needs to be disclosed. But from the safer side, what I would suggest, let's say you have entered into a transaction 5 years ago, and the amount is still outstanding in your books of accounts. Now, from the safer side, you should disclose that information additionally in your financial statement, to avoid any penalty provision from the MCA side. That should be disclosed, because that's the objective from MCA, to avoid those transactions with struck of companies, right? Why they have struck those companies? Because they are the shell companies. That's why. So if any outstanding is there, my suggestion is to disclose it additionally.
Okay, sir. Thank you, Amit bhai. But once For a- was the Amiji, normally Yes. goods in transit, you know, you ship the goods on 27th of March. The debtor receives on 5th of April. So that is shown as goods in transit normally because it has gone from my office, but it's not received by the recipient. So Correct. that will come as unbilled revenue or what now? Because norms are part of inventory at current assets. Okay. So what I've understood, sir, you have said that let's say you have sent the goods from the lorry, let's say from Delhi to Karnataka. Let me Yeah. put the proper case study so that everybody can understand. So you have sent the lorry or goods in lorry from Delhi to Karnataka on 27th, and it has actually reached to your customer on 4th of April. Correct. Now here, as per AS9, AS9 deals with the revenue recognition under Indian GAAP, and Ind AS 115 deals with the revenue recognition under Ind AS. So what we need to see, when the risk and reward of those goods, when the control of those goods have been transferred, that means we need to go through your contract which you have entered with your customer. Yeah, so it is at the that site and I borne the insurance. So it's in the transfer in title is mine. I tell you, sir, I tell you. So what we need to see, what are the different terms which are applicable or written in the contract. It may be X factory, it may be a X factory, it may be a CIF, it may be a once the goods have been delivered to the customer, right? So if it is written in the contract that the revenue that the it is on X factory basis, that means the moment you remove your goods from your factory, your revenue should have been organized. Your revenue should have been recognized in your books of accounts. In that case, it is my trade receivable unbilled. Yes. Right? But now let's say if it is written, your responsibility will get over once the goods have actually been transferred or hand over to your customer. That means till 4th February to 4th April, on that particular day, your responsibility will get shifted, right? In that period, your service or your sale of goods has not been completed. You will remain the owner of those goods till 4th of April, right? It is not my revenue. You will show it as inventory, as goods in transit. Point well taken. Hope I am clear to you, sir. Thank you. Same opinion. Thank you, Amit ji, for a wonderful deliberation and detailed deliberation and clearing all the doubts from our member. Ah, sir, sir. One point. There was one question of mine. Sure, Ji, ma'am. ma'am. May I ask? Yes, Yes, ma'am. Income tax paid for earlier years and current year. In which head we have to show this? Very good This is question, a ma'am. prior period item or extraordinary item or under which head? Okay. So first of all, madam, extraordinary item language is not allowed under Ind AS. If let's say you are following under Indian GAAP or Ind AS, where we need to show, if you look at, we need to show the PBT, profit before tax. Then we need to show income tax expenses below that. So within the income tax expenses, there are three categories. One is current tax expense, which is for the current year. Second is deferred tax. We need to recognize deferred tax for the temporary difference between the books and tax. And the third item is the taxes of income, the income taxes pertaining to previous period. So it will get captured in the third category within the category of income tax. Am I clear to you, ma'am? Yes, sir. So, but in the form, there is a column for mentioning the whole PL account. In that form, where do we show that? There are three columns for that: prior period item and extraordinary items. No. This is, first of all, this is not a prior period item. This is also not an extraordinary item, right? Yes. What is prior period? Let's say you have forgot to pass one accounting entry, you have forgot to book one expense, which you have identified in the current year. That is called prior period. Okay. Let's say when you are presenting anything in the previous year in the financial statement, you have committed a mistake in doing the totaling, Yes. right? That is a mathematical mistake, which you have identified in current year. That is called prior period item. Yes. Then we have to show this an income tax expense. No, prior period item needs to be disclosed separately, ma'am. There are two disclosures required. You may disclose it within the expense category separately, right? Why it is required? First of all, because it will get disallowed in the current year.
Yes. under tax. So you can disclose it. For example, you are presenting rent expense, current year, previous year, and within the bracket you can show includes prior period expense of 10 lakh rupees. This is the one way of presenting. Okay. Second way of presenting, instead of disclosing in the schedule, you just disclose prior period expense in the P&L face as well, Yes. right, as a prior period item. Yes. So this is the two disclosure which is required as per the standard. And when you have talked about extraordinary item, what is that? Extraordinary item means something has been done in the current year due to which the company has incurred a loss or company has gained something. It may be because of fire. It may be because of exchange fluctuation has been made significantly, due to which company has made a gain of, let's say, 10 crore rupees. Right? So it depends upon the judgment, but the mathematical inaccuracy, any error is a prior period and not extraordinary. Okay, sir. Thank you. Okay, thank you so much, ma'am. Surender ji, ask your question. Surender ji. Yeah, Amit ji, if you can throw some light on the definition of small company, please. Sir, definition of the small company has been written in the Caro applicability. Right? First of all, small company definition has not been defined in the Schedule 3. And what the applicability of Caro says, any company with a paid up capital less than or equal to 50 lakhs and with a reported turnover of less than or equal to 2 crore rupees, that becomes a small company. 50 लाख या उससे कम की कैपिटल होनी चाहिए, 2 करोड़ या उससे कम की टर्नओवर होनी चाहिए, that becomes a small company. Thank you. Thank you. Got it. Thank you, But sir. sir, that has been revised. Sir, Caro 2020 है, so this is what it is coming. No, but sir, as per Companies Act, the definition of a small company has been revised to capital up to 2 crores and turnover up to 20 crores. So, sir, the clarification will be required, Anandji, because I told Sanjeev also there is a mismatch between both the definitions, because since 2020 this definition of Caro has not been changed at all. That's why in hibernation. Okay. So, sir, And what I it will is- do, I will recheck this particular point and I will come back to you on this aspect. And sir, it is very clearly written that it is not applicable on a small company. So there is a confusion that small company definition is different, and there is a condition given that it should be below 1 crore capital and reserves, and borrowing should also be less than 1 crore. So in case it is a small company, so and that clause is preceding this clause. So are you clause talking which about in respect of Caro applicability for the Caro, private Caro, companies? yeah. Okay. Yeah, Caro applicability, the clause which states that it will not be applicable on OPC and A small company. Correct. it precedes the condition which states that it will not be applicable if the capital and reserves are below 1 crore or the borrowings are below 1 crore. So that should be applicable. Sir, I totally agree. There is some confusion in between the small company definition and the private companies, where we are saying any company having a borrowing less than this amount or the capital against this amount, that's not applicable. So there is some contradiction. I agree. चलिए सर, छोटे छोटे 3 क्वेश्चन है सर, क्विकली जरा ले लें. आदिश जी पूछ रहे हैं, इन केस ऑफ पीपीई 10% change reason is to be given only due to revaluation or due to addition and disposal also? No, sir. No addition and disposal, only because of the revaluation. Next question, Anand Jain ji पूछ रहे हैं, how to show comparative ratio in case of company converted from proprietorship firm? Converted from proprietorship firm in the current year itself. Yes, this is the first year of the company. Not applicable. So in that case, first of all, previous year numbers is not supposed to be given in the financial statement, right? Hence, the ratio cannot be computed for the previous year. Okay. Next and last question, Vinod Arora is asking, sir, if we transfer assets from sales to local jurisdiction, then price of assets vary. So do we have to book the profit or loss on transfer of assets as revaluation reserve or profit or loss on sale of assets? Sir, not clear with the question. Can you please repeat? Sir, if we transfer assets from SEZ to local jurisdictions,
then price of assets vary. So do we have to book the profit loss on transfer of assets as revaluation reserve on or profit and loss on sale of assets? Okay, okay. So he is simply asking, when I have sold the asset from one location to another location, should I book it in the revaluation reserve or in the P&L? It will be in the P&L, sir. Whenever the asset has been sold or transferred to another party, then the gain and loss will be charged to P&L, and we are supposed to pay taxes on that. It is Okay. not a revaluation. Okay, sir. Thank you. Thank you very much. And request Rajiv Kohli ji for a formal vote of thanks, sir. Over to Rajiv ji. Thank you, sir. Thank you so much. I hope people have understood what I want to convey, and Yes, I have sir, tried yes. my session not so technical and very simple and the basic manner. Thank you, Amit ji, for such a lovely deliberation, which very comprehensive, easy to understand, and we have done the total array of all the things which are changing place, because lots of changes. This is not business as usual. There is more and more transparency. You cannot transfer the funds. There cannot be a diversion of funds. The aging process has to take place, because what is more than 3 years old in debtors and what is more than 3 years old in my payables. So a scope of whether it's going to be my income or it's going to be my loss, because that is a question they are bothered about. Similarly, transfer and the class of assets, now you have a one is could be a leased land, one could be a outright land. So you can sub clauses. So a person has to take their own judgment what is material for them, then do it accordingly. So it is depending on the management. It's basically a management call. But nevertheless, it's a beautiful, excellent session. Thank you very much. I think everyone enjoyed it. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, everyone. Thank you, ji. Thank you. Thank you, sir. Radhe Radhe, thank you.